Welcome to the Deep Dive. Today we're getting into the Employees Provident Fund Organization. You probably know it as EPFO. Right. And our aim here is really to unpack it for you. We've gone through a lot of notes, FAQs, the works. Yeah, to basically give you a clear picture of this, massive Social Security setup in India. Exactly. We want to explain what it does, the benefits for millions of workers, and really how it helps secure their financial future. We'll try to get beyond just the basics. Find some of those surprising details and practical bits that you might not know. Precisely. So let's start right there. In a nutshell, what is EPFO? Okay, so it's India's main social security body, established quite a while ago. Yeah, way back in 1952, under Specific Act. Its job, fundamentally, is managing three key things for workers in what's called the organized sector. And those are? Your Provident Fund, that's the savings part, then pensions, through the EPS, the Employees Pension Scheme, right, and also insurance cover, which comes via EDOI, the Employees Deposit Linked Insurance Scheme. Got it. Savings, pension, insurance, and you mentioned it's big. Oh, absolutely. It's genuinely one of the largest social security organizations in the world. We're talking nearly 300 million member accounts. 300 million. Yeah. That's staggering. It must have quite a history to reach that scale. It certainly does. It didn't just pop up overnight. It actually started with an ordinance in 1951. An ordinance, so like a temporary measure. Kind of, yeah. It was then replaced by the proper act in 1952. And back then, it was tiny compared to now. How small? It only covered workers in 6 industries initially. Now it's over 190 different sectors and types of businesses. That's incredible growth. What were the major steps along the way? Well, a key really move was the family pension scheme introduced in 71. That broadened the safety net. Okay. But a really big one was in 1995. That's when the Employees Pension Scheme, the EPS we know today, came into being. It offered a more structured retirement income. That's right, replacing the earlier family pensions. Exactly. And then later, around 2001, there were more revisions to the pension rules linked to the 5th Central Pay Commission recommendations, trying to keep benefits relevant, you know. So it's constantly evolving. What about adapting to, the modern world, technology? Definitely. EPFO has actually been quite proactive there. Think about the UMANG app, launched back in 2017. Ah, yes, the Unified Government app. EPFO is a big part of that. A huge part. And it's pretty well regarded, even won an award for being user-friendly. It puts a lot of services right in your pocket. That's crucial these days. It is. And it showed its adaptability during the pandemic crisis, too, in 2020. They were involved in direct cash transfers and even support for LPG cylinders for some people. Wow, okay, so it can step up in emergencies. Who actually runs this whole thing? What's the structure? It operates under the Ministry of Labor and Employment, so government oversight. Right. The main office, the central office, is in New Delhi. That's headed by the Central Provident Fund Commissioner, a CEO, essentially. Okay, the top boss. Then you've got zones, managed by additional CPFCs. And under them, the local offices, about 147 across India, run by Regional Provident Fund Commissioners, or RPFCs. So a clear hierarchy. But who sets the overall direction? The policies. That's the job of the Central Board of Trustees, the CBT. It's the main governing body. And who's on this board? It's designed to be representative. You have people from the government, naturally, but also representatives of employers and employees, the workers themselves. So all the stakeholders have a voice. That's the idea. The labor minister chairs the board, and the Central Provident Fund Commissioner acts as the member secretary, kind of linking the board to the operations. Makes sense. And they have specific committees, too, focusing on key areas like finance, investments, pensions, tech. Makes the governance more manageable. Okay, let's talk about that finance part. Managing money for 300 million people. Yeah. That's trillions of rupees. How do they handle that responsibly? It's a massive responsibility, and safety is paramount. They follow strict investment rules set by the Ministry of Finance. The number 1 goal is protecting the capital. So, safety first. But they need growth, too. Right? Absolutely. They aim for long-term growth. Yep. The strategy involves diversification. Roughly 45% goes into government securities, very safe. Okay. About 35% in debt instruments, another 15% or so in equity, but specifically through ETFs, exchange-traded funds. ETFs, like baskets of stocks. Exactly, spreads the risk. And the remaining 5% is in short-term securities for liquidity.
It sounds quite structured. Is there oversight on these investments? Oh, definitely. It's multi-layered. There's an investment committee with financial experts reviewing things quarterly. Right. They run stress tests, what-if scenarios for market downturns. There are independent audits every year. Performance is constantly checked against market benchmarks. So they're actively managing risk. Constantly. And interestingly, there's an ethical screen, too. They avoid investing in things like tobacco, controversial weapons, or companies known for poor management. That's good to know. And how transparent are they about all this? Can members see how the money's doing? Well, they publish detailed annual financial statements, balance sheet, income expenditure, cash flow. These get audited externally and need approval from the main board. So yes, there's accountability. Okay, that covers the structure and finance. Let's get to the core stuff for members of the benefits. Starting with the main one, the Provident Fund, or PF. Right, the PF. This is your basic savings pot. Typically, you contribute 12% of your basic pay, plus dearness allowance and any retaining allowance. And the employer matches that 12%. Usually, yes. Though a part of the employer's share gets diverted to the pension scheme, the EPS. But the key thing is that 12% comes from both sides for the overall contribution framework. What about interest on this PF? The government declares an interest rate each year. And a really important point. Even if your employer is late paying the contributions, you still get the interest credited to your account for that period. Oh, that's crucial. So the employee doesn't lose out because of the employer's delay. Exactly. The employer faces penalties, but the member's interest is protected. Also, things like subsistence allowance paid during suspension don't count as wages for PF deductions. Good clarification. Now, the pension part, EPS, how does that work for retirement? The employee's pension scheme gives you a monthly pension after you retire, or if someone becomes disabled, or sadly, if they pass away while working, their family might get it. Is everyone eligible? You generally need at least 10 years of service where contributions were made to the EPS. One interesting rule: if you're 58 or older when you join a job, you can join the PF, but not the EPS. Ah, okay, so there's an age limit for joining the pension scheme. Right, and if you're already drawing a pension from somewhere else, you can only be in the PF part, not EPS again. How is the pension amount actually calculated? Is there a formula? Yes, there is. It's your pensionable salary multiplied by your pensionable service, and then the whole thing is divided by 70. Okay, break that down. What's pensionable salary? That's the average of your monthly salary during the last 60 months, the last 5 years of your contributions. But, and this is key, it's currently capped at 15,000 rupees per month. So even if you earn more, they only count up to 15,000 for the pension calculation. Correct, for the standard calculation. And pensionable service is the number of years you've contributed, up to a maximum of 35 years. So based on that cap and the formula, what's the maximum possible pension? With 35 years of service at that maximum euro 15,000 wage ceiling, the pension works out to about 7,500 per month currently. Right. And there are options for taking it early or for family pensions. Yes, you can opt for a reduced pension earlier, between 50 and 57, and there are specific rules for providing pensions to spouses or children if the member passes away. Okay, that covers savings and pensions. What about the third leg, the insurance EDLI? Employees deposit-linked insurance. This pays out a lump sum if a member dies while they are still employed and contributing. Who qualifies for this? Basically, all EPFO members are covered, usually after about 12 months of continuous service. The benefit amount is linked to their wages, again up to that 15,000 ceiling. How much can the payout be? It can go up to 6 lakh or even euro 7 lakh in some specific circumstances. The calculation involves the average wages over the last 12 months. And who pays for this insurance? The employee. No, this is entirely paid for by the employer. There's no deduction from the employee's salary for EDLI, and the benefit paid out to the family is tax-free. That's a really valuable benefit then, at no direct cost to the worker. It is. It provides a crucial safety net. I also saw mentions of using PF for housing. How does that fit in? Yes, you can take out what are called housing advances. These are partial withdrawals from your PF balance. For what specific reasons? Things like buying or building a house or flat, or even paying back an existing home loan. Is there a waiting period for that? Generally, yes. You usually need to have been an EPF member continuously for at least 5 years before you can apply for a housing advance. Okay, so it's there, but after you've been in the system for a bit, it feels like EPFO touches many important life events. It's designed to. Retirement, housing, unfortunate events. It provides some financial cushion. Now, with all these benefits, how easy is it for members to actually interact with EPFO? We mentioned the UMang app. Right.
Digital access has been a huge focus. They have online portals for members and employers, which simplifies a lot of things. Umang is the flagship mobile app. What else can you do online? You can track transactions using a TRN number that's a unique reference number. There are calculators online to estimate your potential pension or EDLI benefit. Handy tools? Very. If your UAN, your universal account number, is activated, you get SMS alerts about contributions hitting your account. UAN, that's the single number that stays with you across jobs, right? Exactly. Super important. You can also view your digital passbook online, which shows all your account activity. What if you need face-to-face help? They have something called Nidi Apke Nakat 2.0. These are basically monthly service camps held across the country where you can get help, ask questions, resolve issues. Good to have that physical option too. It caters to everyone's comfort level with technology. Okay, handling such vast sums, protection must be a major concern. How are these PF accounts safeguarded? Protection is key. Firstly, there's judicial immunity. Generally, court orders can't attach your PF balance. It's shielded. So creditors can't just seize it? Not usually. Section 10 of the EPF Act specifically says you can't assign your PF money away, and it can't be attached. Plus, if an employer goes bankrupt, yes, PF dues get priority. They have to be paid out before most other debts the company owes. That's a strong protection. Yeah. What about preventing misuse, either by members dipping in too often or employers messing with the funds? Right. For members, while withdrawals are allowed for specific needs like medical emergencies or housing, there are rules and limits. It's meant for long-term savings, primarily. Discouraging casual withdrawals. Exactly. And for employers. Trying to illegally access or reduce PF contributions is taken very seriously. There are hefty fines, potentially even jail time. What if an employer just doesn't pay? Defaults? PFO has strong recovery powers. They can attach the employer's bank accounts, intercept money owed to them by others, sell off their assets. Wow, serious measures. They can even file criminal cases or make company directors personally liable in some situations. They are quite determined to recover dues. Okay, let's look at it from the employer side now. When does a company have to join EPFO? The general rule is if you're in a specified industry and have 20 or more employees, coverage is mandatory. What if you have fewer than 20? You can join voluntarily, but it usually needs the local RPFC's okay, and importantly, the agreement of most of your employees. You can't just force it on them. And the main duty is deducting and contributing that 12%. Yes, deducting the employee's 12% share from their wages, that's basic pay, DA, retaining allowance, and adding the employer's own contribution. And they can't play games with salaries to lower the amount. Absolutely not. Splitting wages just to reduce the PF amount is prohibited. And as we said, if they deposit late, they pay penalties 12% annual interest plus potential damages while the employee still gets their interest. What about companies that run their own PF trusts? Exempted establishments? Yes. They have permission to manage the funds themselves, but under very strict conditions. Decided. They have to file regular reports, provide member services that are at least as good as EPFO's, and they're closely watched by EPFO. If they mess up, what happens? Their exemption can be canceled. Then they have to transfer all the money back to EPFO. It's a big responsibility. Can an employer choose only the pension scheme? No. You have to be part of the Provident Fund Scheme to be eligible for the pension scheme, EPS. It's a package deal. And we mentioned the age 58 cutoff for joining EPS earlier. Right. If you join at 58 or older, you contribute to PF, but you're not eligible to become a member of the pension scheme. Okay. What about people working across borders, international workers? EPFO has specific rules for them. They offer services like certificates of coverage. What's that for? It helps workers avoid paying Social Security contributions in both India and another country if there's a bilateral agreement between the countries. Prevents double contribution. Makes sense. Yeah. And India has these Social Security agreements with a number of countries. Also, that 15,000 wage ceiling for contributions, it doesn't apply to international workers. Oh. So they contribute on their full salary? Generally, yes. Unless the specific agreement says otherwise, they contribute on their entire pay, and they usually can't opt out of EPF. That's quite different. Okay, before we wrap up this section, any other key operational things we should quickly mention? There seems to be so much detail. Yes, there is a lot. KYC is vital. Know your customer, linking your Aadhaar, PAN, bank details. It's essential for smooth processing. And the UAN universal account number. We touch on that. Crucial for portability between jobs. Interest gets credited annually, usually September. The pension fund's health is checked by actuaries every 3 years. Actuaries, the risk specialists. Right.
There's also an external concurrent auditor keeping an eye on investments constantly. EPFO even has its own training academy, PDNSS, Training their own staff. and running programs. There are government schemes like PMRPY linked to EPFO, incentivizing job creation. We mentioned the online calculators, the International Worker Portal, the Employer e-Haspa. Lots of digital tools. Yes, and initiatives like NRBDH aim to make online services even smoother. They have clear grievance procedures, online portals, helplines. What about getting money up? Withdrawal timelines. It varies. If you resign, there's usually a waiting period, then processing takes maybe 15, 30 days. Online claims are generally faster. Transferring your account when changing jobs is also mostly online now, or via Form 13. And interest keeps getting added even if an account is inactive. Yes, since 2016, interest is credited even on dormant accounts. That was a big change. What else? Housing advances we mentioned. Nomination. Very important. Nominating someone means if anything happens to you, the money goes smoothly to the person you chose. Without a nomination, it goes to family or legal heirs, which can be more complex. Okay. Pension calculations, scheme certificates, exemptions. Pension formula we discussed. Scheme certificates can be useful if you leave service before 10 years but might return later. Exemptions from the pension scheme are for whole establishments, not individuals, and only under strict rules. Voluntary retirement has its own implications. Contributing on higher salary. Yes, possible with a joint declaration under Para 26. Employers use the ECR electronic Challenge Come return for digital compliance. Transparency is key, so annual reports are published. They even have a newsletter. Wow. And Vision 2047 outlines their future goals, things like universal coverage, digital excellence, better service. They adapted during COVID. KYC updates are streamlined, personal detail changes, security warnings about fake sites. They impanel lawyers, CAs, rules for trusts, internal inquiries. It really is a complex ecosystem. It is. Actuarial evaluation every 3 years, external auditor, internships, training policy, international training, workshops for exempted trusts, recruitment processes, efficiency studies. The investment portfolio details are public. Annual statements. They even mention fundamental duties of citizens as context. Commitment to transparency, anti-corruption, vigilance. It's a huge operation. Okay, phew. Let's try and summarize that. What we've got here is EPFO, this absolutely massive, really vital organization. It's providing this comprehensive social security framework for millions and millions of workers in India. Absolutely, covering those key areas. Retirement savings through the PF, a monthly pension via EPS, and that crucial life insurance component with EDLI. And all of this is backed up by some pretty strong legal protections for the members' funds. Plus, it's becoming much more accessible, right, through all these digital platforms and services. Definitely. The digital transformation has been significant, making it easier for people to manage their accounts and access benefits. It's a system that has really grown and had to adapt over, 70 years now? It really has. Which brings us to a final thought, I suppose. When you look at this sheer scale, the constant evolution, what do you see next? What kind of innovations or maybe policy shifts could make EPFO even more impactful? Especially reaching workers in perhaps the newer parts of India's economy. That's the big question, isn't it? As India's economy changes, think gig workers, the informal sector, how does a system like EPFO adapt to include them effectively? Maybe more tailored digital solutions. Constant reevaluation of the pension scheme for sustainability, ensuring it remains truly universal. Yeah, ensuring it keeps pace with the nation it serves. It's clearly not static. Not at all. It has to keep evolving. Well, there's certainly a lot there. If any of you listening want us to dive even deeper into a specific piece for him, maybe those investment details or the nitty-gritty of pension calculations or what's latest on the digital front, do let us know. We can always revisit parts of this. Absolutely. We hope this deep dive has given you a clearer, more comprehensive understanding of the Employees Provident Fund organization. Thank you for joining us. Namaskar.
आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पर बात करने वाले हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO। जी हाँ, EPFO लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये सामाजिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य योजनाएं हैं, जो फायदे हैं, उन्हें एकदम सरल शब्दों में समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। देखिए, EPFO का काम असल में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए बचत, पेंशन और एक तरह का बीमा कवर देना है। इसमें 3 मुख्य योजनाएं हैं, PF, EPS और EDLI। हम इन दस्तावेजों के आधार पर एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले PF से शुरू करते हैं, भविष्य निधि। ये नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, PF तो सबसे आम है। इसमें होता क्या है कि कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों मिलकर पैसा जमा करते हैं। कितना? वो शायद 12% वाला नियम है। जी हाँ, आमतौर पर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी DA, उसका 12% कर्मचारी का और 12% नियोक्ता का। अच्छा, दोनों का 12-12%। हाँ, लेकिन दस्तावेज एक और बात बताते हैं कि ये गणना मासिक वेतन पर होती है, पर अगर कोई कर्मचारी निलंबित है और उसे सिर्फ गुजारा भत्ता मिल रहा है तो उस भत्ते पर PF नहीं कटता। अच्छा, ये बारीकियां जरूरी है। बिल्कुल, और ये पैसा लंबे समय के लिए जमा होता है जिस पर सरकार हर साल ब्याज दर तय करती है। ये एक अच्छी बचत है। हाँ, ये तो हुई बचत की बात। अब आते हैं पेंशन पर। EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना, इसके लिए क्या शर्तें हैं? सुना है 10 साल नौकरी जरूरी है। हाँ, पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा चाहिए। और ये 10 साल लगातार एक ही कंपनी में? नहीं, ये जरूरी नहीं। अगर आप नौकरी बदलते हैं और अपना PF अकाउंट ठीक से ट्रांसफर करवाते रहते हैं तो आपकी कुल सेवा अवधि जुड़ती जाती है। अच्छा, लेकिन हाँ, एक और नियम है। अगर आपकी उम्र 58 साल या उससे ज्यादा है तो आप EPS स्कीम में नए सदस्य के तौर पर शामिल नहीं हो सकते। भले ही PF कटता रहे। जी, भले ही आप PF में योगदान जारी रखें, EPS में 58 के बाद एंट्री नहीं है। और ये पेंशन मिलती कितनी है? इसका कोई हिसाब किताब, वो एक फॉर्मूला होता है शायद? हाँ, एक फॉर्मूला है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है सीधा, पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा, और इस पूरे को 70 से भाग देना है। ओके, पेंशन योग्य वेतन क्या है? वो आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले के 60 महीनों यानी 5 साल का औसत मासिक वेतन होता है। पर हाँ, इसकी एक ऊपरी सीमा है, 15,000 रुपए प्रति माह। अच्छा, 15,000 रुपए की सीमा? जी, और पेंशन योग्य सेवा मतलब आपने कितने साल योगदान दिया वो साल गिने जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक। तो इस हिसाब से अधिकतम पेंशन कितनी बन सकती है? गणित के हिसाब से इस फॉर्मूले और सीमा के साथ अधिकतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए बनती है। 7,500 रुपए महीना। ठीक है, समझ गई। अब तीसरी योजना पर आते हैं, EDLI। ये शायद बीमा योजना है? बिल्कुल सही, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। ये एक तरह का जीवन बीमा कवर है जो सदस्य को मिलता है। मतलब अगर सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को, नॉमिनी को आर्थिक सहायता मिलती है। ये रकम सदस्य के पिछले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का, ध्यान रहे यहाँ भी 15,000 रुपए की सीमा है, उसका 20 गुना तक हो सकती है। 20 गुना यानी अधिकतम 6 लाख रुपए तक, और कुछ विशेष मामलों में इस पर 50% का अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। तो ये 7.5 लाख रुपए तक जा सकता है? हाँ, अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कवर है। और क्या इसके लिए कर्मचारी की जेब से कुछ जाता है, प्रीमियम वगैरह? नहीं, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। इसका पूरा खर्च, पूरा प्रीमियम नियोक्ता यानी कंपनी उठाती है, कर्मचारी को कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा, हाँ, बस आमतौर पर यह जरूरी होता है कि सदस्य ने कम से कम 12 महीने लगातार सेवा दी हो। और एक और फायदा, ये जो बीमा राशि मिलती है ये पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री? वाह। जी, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(d) के तहत। तो PF, EPS, EDLI ये तीनों मिलकर एक अच्छा सुरक्षा जाल बनाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतना सारा पैसा इतने सारे लोगों का इसमें लगा है, तो ये कितना सुरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है और दस्तावेज इस पर काफी जोर देते हैं। देखिए, EPFO में सदस्यों के फंड की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी बात है न्यायिक प्रतिरक्षा। मतलब किसी भी कोर्ट के आदेश से या किसी देनदारी के लिए आपके PF खाते को कुर्क नहीं किया जा सकता, पैसा जब्त नहीं हो सकता। अच्छा, कोई भी कोर्ट? जी, EPF एक्ट की धारा 10 साफ कहती है कि लेनदार या कंपनी खुद इस पैसे को ट्रांसफर या अटैच नहीं कर सकती। ये पैसा सदस्य का ही है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ,
और सुनिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो भी कर्मचारियों का जो पीएफ का बकाया है उसे चुकाने में प्राथमिकता दी जाएगी दूसरे कर्जों के ऊपर। अच्छा। और अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है, जैसे पीएफ जमा करने में देर करती है या गड़बड़ करती है, तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है, यहाँ तक कि सजा का भी प्रावधान है। मतलब मजबूत नियम है। बिल्कुल, ताकि सदस्यों का पैसा सुरक्षित रहे। ये जानकर तसल्ली हुई। अच्छा, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, क्या ईपीएफओ ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है सेवाओं को आसान बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल किया है। दस्तावेजों में उमंग ऐप का जिक्र है, जो बहुत उपयोगी है। उमंग ऐप? जी, UMANG। इस ऐप के जरिए सदस्य अपनी पासबुक देख सकते हैं, क्लेम का स्टेटस पता कर सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं। इसी डिजिटल पहल के लिए ईपीएफओ को प्लैटिनम अवार्ड भी मिला है। अच्छा, अवार्ड भी मिला है? जी, और एक और सुविधा है, TRN क्वेरी सर्च। अगर आपने कोई ऑनलाइन अर्जी दी है या कोई लेन देन किया है तो इस TRN नंबर से आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब पारदर्शिता बढ़ी है? हाँ, पारदर्शिता और पहुंच दोनों बढ़ी हैं। तो हमने आज ईपीएफओ की 3 मुख्य योजना पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई को समझा, फंड की सुरक्षा के बारे में जाना और डिजिटल सुविधाओं पर भी बात की। ये सब मिलकर वाकई संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का आधार बनाते हैं। बिल्कुल, और ये जानना कि ये लाभ कैसे काम करते हैं, पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, बीमा कितना मिलता है और सबसे जरूरी कि आपका पैसा सुरक्षित है, ये सब बातें सदस्यों को मानसिक शांति देती हैं। दस्तावेज इन्हीं चीजों को स्पष्ट करते हैं। हाँ, ये तो है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, हमने सामान्य नियमों की बात की, लेकिन सोचिए अगर किसी की नौकरी बदलती है या कोई रिटायरमेंट के बहुत पास है या किसी के डिटेल्स जैसे नाम या जन्म तिथि में सुधार करवाना है, तो ये खास परिस्थितियां इन लाभों को पाने की प्रक्रिया पर कैसे असर डाल सकती हैं? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। हर किसी की स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, शायद इस पर और जानकारी खोजना फायदेमंद हो सकता है। स्वागत है ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ यानी कि ईपीएफओ। हाँ जी, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ईपीएफओ 1952 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ 2 ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ। हाँ जी, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਓ, ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ? हाँ जी, बहुत ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਪੀਐਫ। ਹਾਂ, ਪੀਐਫ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12% ਬੇਸਿਕ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 12% ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, 12% ਮਾਲਕ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, मतलब ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਕਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਈਪੀਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਲ, ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, EPS। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ EPS। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ PF ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ EPS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਪਰ EPS ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, EDLI। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, EDLI ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਕਮ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ, ਉਹੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ PF, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਇਹ 3 ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ 3 ਥੰਬ ਨੇ EPFO ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ EPFO ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, EPFO ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ? ਲਗਭਗ 45% ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 35% ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਟ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 20%। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ETFs, ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ETFs ਰਾਹੀਂ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ 5% ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ PF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ? ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ EPFO ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ EPFO? ਦੇਖੋ, EPFO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਕੁਆਜ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰ। ਓ
ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੱਲ, ਮੂਵੇਬਲ ਤੇ ਅਚਲ ਇਮੂਵੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਪਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 409 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12% ਵਿਆਜ? ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਯਾਨੀ ਡੈਮੇजेस ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਈਪੀਐਫਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਯੂਏਐਨ। ਹਾਂ, ਯੂਏਐਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਫ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਯੂਏਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਹੈ ਯੂਮੰਗ ਐਪ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਯੂਮੰਗ ਐਪ, ਠੀਕ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, KYC ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਹੈ ਨਿਧੀ ਆਪਕੇ ਨਿਕਟ 2.0। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਿਗ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ।
अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO की। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बहुत बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निजाम है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश होगी कि इस कदरे पेचीदा निजाम को आसान अल्फाज में समझा जाए, जो मवाद हमारे पास है उसकी रोशनी में। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है, दुनिया की आप कह लें सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी तंजीमों में से एक है ये। तकरीबन 30 करोड़ अकाउंट्स हैं इसके तहत। 30 करोड़, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी बिल्कुल। इसका बुनियादी मकसद देखें, जो मुनज्जम शोबा है यानी फॉर्मल सेक्टर, उसके कारकुनों के लिए 3 अहम चीजों का इंतजाम करना है। 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो है प्रोविडेंट फंड, जिसे हम PF कहते हैं, जो बुनियादी बचत है। दूसरी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम EPS यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन। और तीसरी है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी EDLI। ये दौरान मुलाजमत खुदा न खास्ता वफात की सूरत में एक तरह का बीमा है। ठीक है, तो ये 3 स्तून है, PF, पेंशन और इंश्योरेंस। चले पहले PF को देखते हैं, ये तो सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। जी हाँ बिल्कुल, ये बुनियादी बचत स्कीम है। इसमें होता ये है कि मुलाजिम और आजर यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह और महंगाई अलाउंस, जिसे DA कहते हैं, उसका 12% जमा करवाते हैं। अच्छा, दोनों का 12%? हाँ। और इस रकम का क्या होता है? ये रकम जमा होती रहती है और हुकूमत हर साल इस पर एक सूद की शरह का ऐलान करती है, तो ये बढ़ती रहती है। मकसद जाहिर है लंबी मुद्दत की बचत, खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए। सही, यानी ये एक लाजमी बचत है जो बढ़ती भी रहती है। जी ठीक है। अब आते हैं पेंशन स्कीम यानी EPS पर। इसका क्या मामला है? जी, EPS का मकसद है रिटायरमेंट के बाद एक माहाना आमदनी यानी पेंशन देना। इसके लिए कोई शर्त वगैरह होती है? हाँ, शर्त यह है कि कम से कम 10 साल की पेंशनेबल सर्विस होनी चाहिए, मतलब वो अरसा जिसमें आपने उस स्कीम में हिस्सा डाला है। और पेंशन मिलती कब से है? पूरी पेंशन तो 58 साल की उम्र में मिलती है, लेकिन कुछ सूरतों में 50 साल के बाद भी कम शरह पर पेंशन ली जा सकती है। और ये पेंशन मतलब कितनी बन जाती है अंदाजन? देखें, इसका एक फॉर्मूला तो है जो आखिरी 60 महीनों की औसत तनख्वाह और सर्विस के सालों पर मुनासिर है, लेकिन इसमें तनख्वाह की एक हद है 15,000 रुपए माहाना। ओह, सिर्फ 15,000 की हद? जी, तो इस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा पेंशन जो बन सकती है वो तकरीबन 7,500 रुपए माहाना है। सिर्फ 7,500? हाँ, और कम से कम पेंशन 1,000 रुपए माहाना की गारंटी है। एक और बात, जो लोग 58 साल या उससे ज्यादा उम्र में EPFO ज्वाइन करते हैं, वो इस पेंशन स्कीम के अहल नहीं होते। ये 7,500 वाली बात तो सोचने वाली है। खैर, ये बुनियादी तहफ्फुज़ तो देती ही होगी। जी, बुनियादी मकसद वही है, और इसका ज्यादातर फंड आजर के 12% हिस्से से ही जाता है, मुलाजिम के हिस्से से नहीं। अच्छा, ये अहम नुक्ता है। ठीक है। अब तीसरी चीज, EDLI यानी इंश्योरेंस स्कीम। जी, EDLI। ये दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में लाइफ इंश्योरेंस है। अगर कोई मेंबर दौरान मुलाजमत वफात पा जाए तो उनके नामजद करदा वारिस को यानी नॉमिनी को एक यकमुश्त रकम मिलती है। और इसका प्रीमियम कौन देता है? इसका प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ आजर अदा करता है, मुलाजिम की तनख्वाह से कुछ नहीं कटता इसके लिए। ये तो अच्छी बात है। कितनी रकम मिलती है इसमें? ये रकम 6 लाख रुपए तक हो सकती है, कुछ खास केसेस में ये 7.5 लाख तक भी जा सकती है। और अहम बात ये कि ये रकम टैक्स से पाक होती है। वाह, तो बचत, पेंशन और इंश्योरेंस तीनों का अहाता हो गया। इन सब चीजों को चलाने के लिए आजकल UAN और KYC का बहुत जिक्र सुनते हैं। ये क्या है? UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये बहुत ही अहम चीज है। ये हर मेंबर का एक मुनफरिद मुस्तकिल नंबर होता है। आप नौकरी बदल भी लें, आपका UAN वही रहता है। अच्छा, तो इससे पुराने अकाउंट्स का क्या होता है? यही तो सहूलत है। सारे पुराने PF अकाउंट्स इसी एक UAN के नीचे आ जाते हैं। उन्हें ट्रांसफर करना, मुनज्जम रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक। और KYC यानी अपने सारिफ को जाने? जी, KYC तो आजकल हर मालियाती काम के लिए जरूरी है। इसमें आपको अपना UAN, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। और ये क्यों जरूरी है? इसके बगैर आप ज्यादातर ऑनलाइन सहूलियात इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ऑनलाइन पैसे निकालना या ट्रांसफर करना या अपनी पासबुक देखना। तो KYC लाजमी है, लेकिन क्या इससे उन लोगों को मुश्किल नहीं होती जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं है?
हाँ, ये एक चैलेंज तो है, खास तौर पर देही इलाकों में या कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए। लेकिन ईपीएफओ ने कोशिश की है कि इस अमल को आसान बनाया जाए और ऑनलाइन खिदमात तक रसाई बढ़े। और डिजिटल खिदमात की बात हुई है तो ईपीएफओ ने उस पर काफी जोर दिया है, जैसे वो उमंग ऐप और मेंबर पोर्टल वगैरह। जी बिल्कुल, ये बहुत कारआमद है। आप घर बैठे अपनी पीएफ पासबुक देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, क्लेम वगैरह भी ऑनलाइन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जुज़वी रकम निकलवाने के लिए, जिसे एडवांस कहते हैं, या फंड ट्रांसफर के लिए या पेंशन के लिए भी ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। हत्ता के नामजदगी यानी ई नॉमिनेशन वो भी अब ऑनलाइन होती है और लाजमी भी है। यानी काफी चीजें अब उंगलियों की पोरों पर है। हाँ, अच्छा, एक सवाल जहन में आता है, ये जो पैसा जमा होता है इसकी हिफाजत की क्या जमानत है? कानून इस रकम को काफी तहफ्फुज देता है। एक तो ये कि आम हालात में अदालत भी पीएफ की रकम को कुर्क नहीं कर सकती, ये सेक्शन 3 के तहत महफूज है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आजर दिवालिया हो जाए तो पीएफ के वाजिबात को दूसरे कर्जों पर तरजीह दी जाती है, मतलब पहले मुलाजमों का पैसा अदा किया जाएगा। और अगर आजर वक्त पर हिस्सा जमा ही ना करवाए तो अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती हैं। ये आजर की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर वो वक्त पर हिस्सा जमा नहीं करवाता तो उस पर जुर्माने लगते हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस दौरान मुलाजिम के सूद का क्या होगा? अच्छी बात यह है कि अगर आजर की गलती से देर होती है तो भी मुलाजिम के हिस्से पर बनने वाले सूद का नुकसान नहीं होता, वो उसे मिलेगा। ये अहम है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ने पर रिटायरमेंट से पहले इस पीएफ से कुछ रकम निकलवाई जा सकती है? हाँ, कुछ खास जरूरियात के लिए जुज़वी रकम निकलवाई जा सकती है, उसे एडवांस कहते हैं। किन जरूरियात के लिए? जैसे मकान बनाने या खरीदने के लिए, किसी संगीन बीमारी के इलाज के लिए, अपनी या बच्चों की शादी या तालीम के लिए, या अगर कोई 1 महीने से ज्यादा बेरोजगार है। इन सूरतों में कुछ शराइत के तहत रकम निकलवाई जा सकती है। लेकिन बार बार निकलवाना शायद मुनासिब ना हो। बिल्कुल नहीं, याद रखना चाहिए कि इसका बुनियादी मकसद रिटायरमेंट के लिए बचत करना है, तो एडवांस सिर्फ मजबूरी में ही लेना चाहिए। ठीक है, तो खुलासा ये हुआ कि ईपीएफओ मुनज्जम शोबे के लिए एक बहुत अहम समाजी तहफ्फुज का जाल है जो बचत, पेंशन और इंश्योरेंस फराहम करता है, और यूएएन, केवाईसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे पहले से ज्यादा आसान और शफाफ बना दिया है। जी बिल्कुल, और सबसे जरूरी चीज है आगाही। मेंबरान को भी अपने हुकूक का पता हो और औजरों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, तभी इस निजाम का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। सही कहा, मालूमात ही ताकत है। अच्छा, आखिर में एक नुक्ते पर बात खत्म करते हैं। हिंदुस्तान की मईशत बदल रही है, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, गैर रस्मी शोबा बढ़ रहा है। जी, ये एक नया चैलेंज है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में ईपीएफओ जैसा निजाम जो बुनियादी तौर पर मुनज्जिम शोबे के लिए बना था, वो इन नए तर्ज के कारकुनों को समाजी तहफ्फुज कैसे फराहम करेगा? क्या ये खुद को ढाल पाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर गौर व फिक्र की जरूरत है। इस निजाम को वक्त के साथ बदलना होगा। बिल्कुल, ये गौर तलब पहलू है। इसी के साथ आज की इस गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Think for a moment about the sheer scale of India, the workforce, and the systems designed to support it. It's massive. Right. And one organization that really stands out, I mean, in terms of its reach, is the Employees
Provident Fund Organization, or Yeah. EPFO. Absolutely. We're talking about one of the biggest Social Security providers globally. It handles provident funds, pensions, insurance. It's huge. It's a vital safety net, really. Yeah. Touching millions and millions of lives, playing such a key role in their financial well-being, especially later in life. Definitely. But let's be honest, navigating it all. It can feel pretty daunting, can't it? All the rules, the forms, the deadlines. It's easy to get a bit lost. That's precisely why we've done this deep dive. Yeah. We've gone through, loads of resources, articles, FAQs, official guides, to really pull out the core information you need. The essential. Exactly, to help you really grasp your EPFO benefits and also what your responsibilities are. Think of this as your kind of streamlined guide. Yeah, the goal is to cut through the complexity. We want to give you a really solid, clear understanding of what the EPFO offers and, importantly, how it all works for you. Basically, everything you need to know without having to read piles of documents. Precisely. Making it clear, straightforward, and, usable information for everyone. So we'll be covering the fundamentals today. Right. Let's unpack this. We're going to look at the three main schemes: the EPF, the EPS, and EDLI. We'll definitely talk about the Universal Account Number, the UAN, and why KYC, Know Your Customer, is so critical. And what you need to do as a member, the rules around taking money out early, partial withdrawals, and some key timelines. Okay, let's get started. Where should we begin? Let's lay the groundwork first. Understanding those core schemes is key. Makes sense. First up, the Employees Provident Fund Scheme, the EPF. This one's been around a while, since 1952. Yeah, This is basically your main retirement savings tool. Both you, the employee, and your employer put money in regularly. And a really useful thing is you can check your PF passbook online anytime. See how it's growing. Exactly. It's designed to build up a decent fund for when you retire. And a major plus point is the interest rate. Ah, yeah, the interest. It tends to be pretty good, Yeah. often higher than what you'd get from, say, a typical bank fixed deposit or even the Public Provident Fund, the PPF. Which means your money can grow faster, really boosting that retirement nest egg. That's the idea, and it directly impacts your financial security down the line. And if you want to save even more. Well, you can make voluntary contributions to your EPF over and above the mandatory ones, though there's a limit. It can't exceed your actual PF wages. Got it. Okay, next scheme. The Employees Pension Scheme, or EPS. Yeah. That started in 1995. Right. Now, this one's structured differently. Oh. The pension you get from EPS later on, it's funded entirely by your employer's contribution and a contribution from the government of India. You, as the employee, don't put money directly into this pension pot. Interesting. So what kind of pensions does it cover? Oh, it's quite broad, actually. It's not just a retirement pension when you hit a certain age. There's provision for members who become disabled. Okay. Pensions for widows or widowers, naturally. For children, too, including children with disabilities or those who are orphaned. Wow, okay. And even, under specific rules, pensions for nominees or dependent parents. And there are minimum amounts set. Minimums, like what? Well, for the main member pension or for a widow or widower, the minimum is set at Rs. 1,000 per month. Okay. For disability pension, it's at least Rs. 250. For children, it's typically 25% of what the widow or widower would get, or Rs. 250, whichever is higher, per child, for up to 2 children under 25. So it provides a basic floor safety net amount. Exactly. That's the aim. Now, you mentioned age. Yeah. When can you actually start getting this pension? Okay, so the standard age for what they call superannuation pension is 58. 58. Right. But say you leave your job earlier, maybe between 50 and 57. You can choose to take an early pension. But there's a catch. Yeah, the amount will be reduced. It gets lowered for each year you take it before 58. Okay. And what if you work past 58? Good question. If you delay taking your pension, say until you're 60, you actually get an increase. It goes up by 4% for each year you delay it after 58. So there's an incentive to wait if you can. Definitely. And something really important, especially regarding the family aspect. Yes. In the unfortunate event a member passes away, their family spouse, children, can actually become eligible for pension even if only one single month's contribution was made to the pension fund. Just 1 month. Wow. That really highlights the immediate safety net aspect. It does. It's a crucial feature. Now, I seem to remember something about taking a lump sum from the pension. Commutation. Ah, yes, pension commutation. Well, that option, where you could take a portion of your pension as a one-off lump sum, was actually stopped after September 26, 2008. Stopped.
Why was that? The thinking was to ensure people had a more steady, regular income throughout their retirement rather than taking a lump sum up front. Makes sense. But what if someone did commute before that date? Right. For those who commuted part of their pension before September 2008, there's a rule that allows their full pension amount to be restored after 15 years from the date they commuted. Okay, good to know. And how long does the widow's or widower's pension last? It continues until they either remarry or sadly pass away. And what if there are complex family situations, say, children from multiple marriages? The rule there is that the children's pension is payable only to the eldest two children based on their date of birth and only as long as they are under 25 years old. Right, eldest two under 25. Got it. And a practical point for families receiving these pensions. Yeah. The widow or widower and any eligible children, they all have to receive their pension payments into the same bank account at the same bank branch. Okay, that simplifies things administratively, I suppose. Presumably, yes. Okay, one last thing on EPS. What about scheme certificates? Right. So if you leave a job and you've completed 10 years or more of pensionable service, but you're still under 58, Yes. you must be issued a scheme certificate. It's mandatory. This certificate basically holds your pensionable service details. And if you have less than 10 years? If you have less than 10 years, getting a scheme certificate is optional. But it can be useful if you plan to join another job covered by EPFO later, as it allows you to carry forward that service period towards the total needed for pension eligibility. Okay, that covers EPS quite thoroughly. Let's move to the third one. The Employees Deposit Linked Insurance Scheme, EDLI, started in 1976. EDLI. Think of this one simply as life insurance cover. Linked to your PF. Exactly, linked to your PF balance. It provides a payout if the member passes away while they are still employed. While in service. That's the key phrase. That is the critical condition. The death must occur while the person is actively employed in a covered establishment. And who gets the money? The nominees. Generally, yes. The people you've nominated for your main EPF account are usually the beneficiaries for the EDLI payout as well. Okay. Have the benefits changed recently? They have, significantly. Yes, since February 15th, 2018, the insurance benefit amount was increased. Increased how? The minimum amount payable to the legal heir is now Rs. $2,050,000. And the maximum can go up to Rs. $7,000. 2.5 lakhs minimum, up to 7 lakhs maximum. That's quite a jump. It is. Though there's also a mention of a maximum assurance benefit cap of Rs. $600,000, so the exact calculation depends on factors like the PF balance. Yeah. But the overall protection level is much higher now. And contributions for EDLI. Contributions are paid by the employer based on the employee's wages, but only up to a certain limit. The current wage ceiling for EDLI contributions is Rs. $15,000 per month. Okay, so even if you earn more, the EDLI contribution and associated benefit calculation might be based on that Rs. $15,000 ceiling. That's generally how it works, yes. It provides a substantial safety net, especially for lower income employees' families. So just to quickly recap the three pillars, EPF is your core retirement saving pot, contributions from both sides. Right. EPS is your pension funded by employer and government for old age and other contingencies. And EDLI is the life insurance linked to your PF, payable on death while in service. Got it in one. Those are the big three. Now let's talk about something that ties all this together in the digital age, the UAN. Ah, the universal account number. Absolutely fundamental now. Think of it as your master key, right? Your passport to the whole EPFO online world. Precisely. It's a unique 12-digit number. Sure. Permanent, assigned to every single EPFO member. It doesn't change when you change jobs. And it acts like an umbrella. Exactly. It links all your different PF member IDs. You might get a new one with each job under the single UAN. And the big advantage of having this UAN. The real power comes when your UAN is KYC compliant. KYC, know your customer. We hear that a lot. What does it mean here? It means you've linked your UAN with your key identification documents specifically, your Aadhaar number, your PAN card, and your bank account details. And why is that so important? Because once your UAN is KYC compliant, you unlock direct access to a whole range of online services. You can manage things yourself without needing to go through your employer for every little thing. Smooths the whole process out. Massively. It ensures you can access your funds, file claims, view your passbook, all much more easily and crucially without unnecessary delays. The KYC process itself is basically a one-time verification of who you are. Aadhaar, PAN, bank account.
Linking these confirms your identity for the EPFO. Yes. And it's not just for convenience. It's essential for using those online services. And it can even impact the tax situation if you withdraw EPF funds later. Oh, right. Taxes. How so? Well, having your PAN linked, for instance, is crucial if you withdraw funds before completing 5 years of service. Without it, you could face higher tax deducted at source or TDS. Okay, vital point. And making sure names match. Critical. Your name, father's name, date of birth, gender, all these details need to be exactly the same across your Aadhaar, PAN, bank account, and EPFO records. Any mismatch can cause delays or rejection of claims. And the bank account needs to be active, obviously. Yes, an active account in your name. Or it could be a joint account with your spouse. And make sure it's capable of receiving the funds if you make a withdrawal. So how do you get this UAN in the first place? If you're starting a new job with a covered employer, they can often generate one for you. But employees can also generate their own UAN directly through the EPFO portal now. And once you have the number, activation is the next crucial step. You do this online on the EPFO member portal. You'll get a password sent via SMS to your registered mobile. Registered mobile, and just one mobile per UAN. That's right. One mobile number linked to one UAN. Keep that number safe and updated. Okay. UAN activated. Then comes linking the KYC details. Yes. You log into the Unified Member Portal and go to the KYC section. You can enter your Aadhaar, PAN, and bank details there. Do they need approval? Aadhaar and PAN are usually verified digitally. For bank accounts, it typically requires online approval from your employer, though if it's an SBI account, sometimes the bank can verify it digitally too. And only the latest linked bank account is used. Correct. If you link a new bank account, that becomes the active one for any future transactions or claims. What if you lose your phone or forget your password? Happens to the best of us. Yeah, thankfully there are online processes for that. You can usually update your mobile number in your profile settings once logged in. But what if you can't log in because you forgot the password and lost the old number? Okay, even then, there's a forgot password option on the portal. It usually involves using your UAN and verifying via an OTP sent to the mobile number linked with your Aadhaar. If even that mobile isn't accessible, there's a slightly longer process involving entering basic details and verifying via Aadhaar or PAN to link a new mobile and reset the password. So solutions exist, just need to follow the steps. Exactly. And the portability aspect of UAN is huge. Portability, meaning when you change job? Yes, you just give your UAN to your new employer. They link your new member ID to your existing UAN. No more hassle of manually transferring PF every time, at least initially. It all stays connected. That simplifies things immensely. And what can you actually do online with a KYC-linked UAN? A lot. You can file claims online for final withdrawal for those partial advances we'll talk about later, even for your pension. No paper forms. Mostly no if your KYC is complete. You can view and download your detailed PF passbook anytime. Check contributions, interest, balances, download your UAN card too. And you mentioned PAN linking being important for tax. Yes, absolutely crucial to disclose and link your PAN. It affects TDS, especially on early withdrawals. And remember, for most of these online actions, you'll need that OTP. For one-time password. Which gets sent to the mobile number linked with your Aadhaar. So keeping that Aadhaar mobile link active is also vital. It all connects. Is there an app for this? Yes, the UMANG app. It's a government multi-service app, but it has a big EPFO section. What can you do on UMANG? Check your passbook, file claims, track claim status, activate your UAN. Pensioners can even submit their digital life certificate through UMANG. It's quite convenient. So minimum KYC needed for online stuff is? Mobile number, Aadhaar, and bank account number. Those are the essentials to get most things done online. Okay, so UAN is your digital key. KYC unlocks the door to easy online management. Yeah. Makes sense. That's the crux of it. Right. Let's switch gears a bit. It's not just about what EPFO does for you, right? There are things you, as a member, need to do. Responsibilities. Absolutely. Being proactive and informed is really key to making the system work well for you. So, what's top of the list? First off, just regularly checking your PF balance and contributions. Look at your passbook online. Make sure everything looks correct. Spot any errors early. Exactly. Catch discrepancies quickly. And related to that, activate your UAN as soon as you get it. Don't delay. And keep that password safe. Oh, definitely. Your UAN password, any OTPs you get, treat them like your bank passwords. Keep them confidential. Don't share them. You are responsible for securing your login. What if you notice your employer hasn't deposited the contribution or the amount is wrong? It's your responsibility to bring it to your employer's attention straight away.
Same if you run into technical glitches using the online portal, report it to the employer and, if needed, to EPFO. Good point. And how should we think about using the PF money itself? It's important to remember what it's for. It's primarily long-term retirement savings. It's not really meant to be treated like a regular bank account you dip into frequently. So use advances sparingly. Ideally, yes. Take advances only for genuine, essential needs that fall under the permitted reasons, which we'll cover. Think long-term security first. And when changing jobs, you mentioned transfer earlier. Yes, crucial. When you move jobs, proactively ensure your PF balance and service history get transferred to your new account under your existing UAN. Don't just leave old accounts dormant. What if you end up with multiple UANs somehow from old jobs? That can happen. If it does, you need to take steps to merge them. Apply for a transfer from the old UANs to your latest active one. Consolidating everything is vital for tracking and for pension eligibility later on. Okay. And watch out for scams. Absolutely critical. Be extremely wary of fake websites, suspicious emails, or phone calls asking for your UAN, password, bank details, or OTPs. EPFO will never ask for these details over the phone or email like that. Stick to the official channels? Always. The official website is epfindia.gov.in. The official app is UMing. Use only those. What else? KYC again? Yes. Ensuring your UAN is seated, meaning linked, with your KYC Aadhaar, PAN, bank account, and verifying that all your personal details match across everything. Name, father's name, date of birth, gender. Check it carefully. And if there is a mismatch? You need to get it corrected. Usually this involves submitting a joint declaration form through your employer to EPFO. Okay. Anything else on the members' to-do list? Yes. File your e-nomination. It's online, relatively simple, and ensures your chosen beneficiaries receive the funds smoothly if something happens to you. Designate who gets what. Super important. And if you have problems, complaints. Don't just sit on them. Use the official grievance portal, EPFI GMS, to file a complaint if you have issues with your account or services. So being an active, informed, and responsible member really pays off. It makes the whole system work better for you and helps safeguard your financial future. Right. Now, a topic that always generates questions. Partial withdrawals. Taking money out before retirement. Yes, EPF advances. These are non-refundable withdrawals you can make while still in service, but only for specific permitted reasons. And the process is often simpler now, right? Yeah. Less paperwork up front sometimes. Often, yes, especially if your KYC is linked. The system recognizes there are times you might need access to these funds for significant life events or emergencies. So, what are some of these reasons? And are there conditions? Definitely conditions, usually based on how many years you've been an EPF member, and the amount you can withdraw is often linked to your wages or the balance in your account. Okay, give us some examples. What about buying a house? Right. For construction or purchase of a house or land, you generally need 5 years of EPF membership. You can withdraw up to 24 times your monthly wages for buying land, or 36 times for buying or building a house. Subject to limits, of course. Okay, 5 years membership, 24 or 36 times wages. What about medical needs? For major medical treatment for yourself, your spouse, children, or even dependent parents, there's actually no minimum service period required. No minimum. That's helpful. Yes. You can withdraw the amount equal to your own share of contributions plus the interest earned on it, or 6 months basic wages and dearness allowance, whichever amount is less. So a safety net for health emergencies. Good. What else? Getting close to retirement? Yes, if you're within 1 year of your retirement date, based on superannuation age, you can withdraw up to 90% of your total PF balance, both employee and employer share, plus interest. 90%? That could be really useful for planning that transition. It can provide significant funds just before you stop working. What about house repairs? Not buying, just fixing up. Yes, for additions or alterations or major repairs to your existing house, again, you typically need 5 years of membership and you can withdraw up to 12 times your monthly wages. Okay. Big life events. Marriage, education. Yes, for your own marriage or the marriage of your children or siblings. Also for the post-matriculation education, so higher education of your children or yourself. Conditions. For these, you generally need 7 years of membership. You can withdraw up to 50% of your share of the contribution, along with the interest earned on it. Half your own share plus interest after 7 years. Okay. Home loans. Can PF help with repayment? It can. If you have an outstanding housing loan taken in your name or jointly with your spouse,
You usually need 10 years of membership for this. And the amount? You can withdraw up to 36 months worth of your basic wages and dearness allowance, or the total employee and employer share plus interest, or the actual outstanding principal and interest on the loan, whichever of those three is the least. So it can definitely help ease that loan burden. It can make a difference, yes. Are there provisions for difficult circumstances, like job loss or company closure? Yes. If your workplace closes down or there's a lockdown and you haven't received wages for 2 months or more, you might be able to withdraw to 100% of just your own employee share plus insured. And if you become unemployed, just lose your job. If you're unemployed for more than 1 month, you can take an advance of up to 75% of your total PF balance. This was a provision highlighted especially during the pandemic, for instance. 75% after a month of unemployment. Okay. Natural disasters. Yes, if there's a natural calamity officially declared by the government, you might be able to withdraw an amount equal to 3 months' basic wages and DA, or 75% of your total fund balance, whichever is less. Specific situations covered too. I think I saw something about power cuts. Yes, there are even older provisions, like for a prolonged power cut affecting the establishment withdrawal of 1 month's wage, or Rs 300, or your employee share, whichever is least, and also for purchasing equipment if a member is physically handicapped. So quite a range of specific needs covered. There are, but again, it's worth stressing. These are for specific, often essential needs, not for casual access. The main goal is still long-term savings. Exactly. Use these options wisely when genuinely needed. Okay, let's talk about who actually has to be a member. Eligibility. Right. So membership is compulsory. It's mandatory for employees working in establishments that are covered by the EPF Act. Covered establishments, like companies over a certain size. Usually, yes, based on the number of employees. And crucially, their basic wages plus dearness allowance, DA, at the time they join, must be up to Rs 15,000 per month. Up to 15,000 at the time of joining. What if their salary goes above that later? Doesn't matter. Once you're in, you're in. They continue to be members. However, the contributions both employee and employer are typically still calculated based on that maximum wage ceiling of Rs 15,000, even if their actual salary is higher. So contributions are capped, but membership continues. What if someone earns more than 15,000 when they first join? Can they opt in? Yes, they can. There's a provision, para 26 of the scheme. Employees joining with a salary above Rs 15,000 can choose to become members by submitting a joint option form with their employer. Within a certain time. Typically, this option needs to be exercised and submitted to the EPFO office within 6 months of joining the establishment. Why would someone earning more choose to join? What are the benefits for them? Well, several reasons. As we discussed, the EPF interest rates are generally quite attractive, often better than other safe investment options, so it's a good way to save. Disciplined savings, too, since it's deducted automatically. Exactly. It enforces savings discipline. Plus, they get access to the other linked benefits the EDLI life insurance cover, and potentially the EPS pension scheme if they meet the criteria and joined before the age limit for EPS. Okay. When does membership officially start? It starts from the date the EPF Act becomes applicable to the establishment they work for. Is there an age limit to join EPF? No age restriction for joining the EPF scheme itself. You can join at any working age. However, there's a key point regarding the pension scheme, the EPS. Which is? If you are 58 years old or older when you first join employment in a covered establishment, you can join the EPF, but you are not eligible to become a member of the employee's pension scheme, EPS. So 58 plus joiners get PF, but no pension scheme membership. And membership is per establishment. If you work for 2 different covered companies simultaneously, you technically have 2 active PF accounts, though both linked under your single UAN. Makes sense. And you need to be getting paid, right? Yes, EPF membership requires wages to be payable. You can't just be an EPS member on its own. You have to be contributing to the Provident Fund, EPF, to be part of the system. What about after retirement age? Can you stay a member if you keep working? Yes, absolutely. If you continue to be employed in a covered establishment, even after reaching the age of superannuation, you can continue your PF membership. Is membership optional at any point while employed? No, if you're eligible and working in a covered establishment, EPF membership is mandatory. You can't just opt out. What if someone is already drawing an EPS pension, maybe from a previous job, and then takes up new employment? Good question. If you're already receiving an EPS pension and start a new job in a covered establishment, you will join the PF scheme again, but you cannot become a member of the EPS pension scheme a second time, just PF contributions. Okay. And how long could you keep your PF account after leaving a job?
You can actually retain your membership and keep the funds in your PF account until you decide to make the final withdrawal. But there's a crucial point about interest. Yes, what's that? If your account becomes inoperative, meaning no contributions are made for 3 consecutive years after you stop working due to retirement, migration, etc., then interest will stop being credited to the account after those 3 years. So don't leave it dormant indefinitely if you want it to keep growing. Though currently interest is paid up to age 58, even if inactive, right? Yes, the rules around interest on inoperative accounts have changed over time. Currently, the general rule is that interest continues to be credited until the member reaches age 58, even if no contributions are made. But it's always best to check the latest guidelines on the EPFO website. Still, transferring is usually better than leaving it dormant. And does it matter if the company has branches in different states? No, the EPF Act covers employees working in any branch or unit of a covered establishment, regardless of where those branches are located within India. And just to be clear, you get membership through your job, right? You can't just apply directly. Correct. Membership comes via employment in a covered establishment. You can't just walk in and open a PF account individually. Does this apply to all types of workers, like security guards, for instance? Yes. If the employer providing the security guards, like a security agency, is covered under the EPF Act, then the guards employed by them are eligible and required to be members. What about companies that used to have their own private PF trust, an exempted establishment? Right. If an establishment previously ran its own approved PF trust, but then becomes covered under the main EPF Act, maybe due to a change in rules or status, the employees must then join the statutory EPF scheme. They generally cannot continue only in the private trust without also being part of the main EPFO system. Okay, so the EPS pension side sounds like it has quite a few rules. For the average person, what are maybe the top 2 or 3 things they absolutely need to remember about EPS eligibility? That's a good way to frame it. Number 1, I'd say, is the 10-year service requirement. You generally need at least 10 years of eligible service to get a monthly pension. 10 years, okay. Number 2 is the age. 58 is the normal age for full pension, but remember you can take it earlier, from 50, though it'll be reduced. Reduced amount for early pension. Right. And third, maybe just the fact that you have to be an EPF member to be part of EPS. You can't be in the pension scheme without being in the Provident Fund scheme. 10 years service, age 58 for full, or 50 for reduced, and must be an EPF member. Got it. That simplifies the core requirements. Those are the big ones for most people. Okay, let's move into some specific procedures and timelines. Things members need to actively do, like nominations. That's changed, hasn't it? Yes, significantly. The old paper Form 2 for nominations is basically out. Since November 1st, 2022, it's all about e-nomination. It's mandatory now. E-nomination, how does that work? Well, it's done entirely online through the Member Unified portal. You log in, go to the nomination section, and add your family members' details. What details do you need? You'll need their Aadhaar number, their name and date of birth exactly as per Aadhaar, relationship to you, address, their bank account details, account number, IFSC, and you also need to upload a photograph of each nominee. Photo 2. Okay. What if the nominee is a child? If the nominee is a minor, you also need to provide the details of a guardian, and you can add multiple nominees. Multiple. And split the amount. Yes, you specify the percentage share of the total PFE DLI amount that each nominee should receive. It has to add up to 100%, obviously. Very important point. What happens if you get married after filing an e-nomination? Crucial. If you get married, any nomination you made before the marriage automatically becomes invalid. You must file a fresh e-nomination after getting married to include your spouse. So, marriage cancels previous nominations. Updated immediately. Can you change it later? Yes, you can update your e-nomination as many times as you like. The latest one you successfully file is the one that counts. Good. What about pensioners? Anything specific for them timeline-wise? Yes, the introduction of digital life certificates, or DLCs, sometimes called Jeevan Pramayan. This started rolling out around the financial year 2015-16. How does that help? It makes it much easier for pensioners to submit their annual life certificate to prove they are still alive and eligible for pension. They don't necessarily have to physically go to the bank or EPFO office anymore. They can do it digitally through various means, including the Umang app. Much more convenient, especially for older folks. Definitely. And just to quickly reiterate a timeline we mentioned earlier, the EDLI insurance benefit maximum was increased significantly from February 15th, 2018. Right, providing a better safety net. Now, leaving a job, updating the date of exit, how does that work now? This is important.
when you leave an employer, your date of exit needs to be recorded in the EPFO system. Your employer should do it, but if they don't, you can actually do it yourself online. Yourself. After 60 days have passed since your last day of working with that employer, you can log into the Member Unified portal and update your date of exit yourself, provided the employer hasn't already done it. And why is this date of exit so important? It's absolutely mandatory for processing online PF transfers. If you want to transfer your PF from your old account to your new one online, the date of exit must be updated in the old account record, and your Aadhaar must be linked to your UAN too. Okay, prerequisite for online transfers. What if you lose your UAN? There's a Know Your UAN service on the portal. You enter details like your member ID or Aadhaar or PAN, name, date of birth, mobile number, and it helps you find your UAN. Then you can proceed to activate it if needed. And linking KYC online. We touched on it, but just to confirm. Yes, you log in, go to Manage KYC, select the document type, PAN, bank, Aadhaar, though Aadhaar linking might happen differently. Enter the details and submit. Remember, bank details usually need employer approval online, unless maybe SBI. Can you update PAN and bank details yourself later if needed? Yes, you can update your PAN and bank details through the portal yourself. The new details will then likely go through the verification approval process again. And changing the mobile number linked to UAN or resetting the password. Also done online, as we discussed. Options are available through your profile settings or the forgot password link, usually involving OTP verification via your Aadhaar linked mobile. Okay. Now, transferring KF when you change jobs. You strongly recommend this over withdrawal, right? Absolutely. Transferring is almost always the better option. You maintain the continuity of your service, which is crucial for pension eligibility. And the money keeps growing? Yes. Your accumulated balance continues to earn compound interest. Plus, if your total service across different employers linked by transfers adds up to 5 years or more, any final withdrawal later is generally tax-free. Withdraw early, you might face TDS. So avoids tax issues too. How do you do the transfer online? It's done using Form 13, but the online version is integrated into the unified portal. You log in, go to Online Services 1, Member 1 EPF account, transfer request. You'll need your UAN, details of your previous employment, which should appear if UAN is linked, and your current employer needs to digitally approve it. Having UAN linked with Aadhaar is usually essential. Seems much smoother than the old paper forms. How long do claims usually take? EPFO generally aims to settle claims whether withdrawal, advance, or transfer within about 20 days, provided everything is in order, KYC is complete, etc. What if there's an error in your name or date of birth in the records? You need to apply for a correction using the joint declaration form. This can now often be initiated online through the member portal, but it requires uploading supporting documents and approval from your employer. Okay. Briefly, what are inoperative accounts? An account is typically considered inoperative if no contributions have been received for 36 consecutive months, 3 years, and the member hasn't applied for withdrawal after retiring, migrating permanently abroad, or passing away. And the interest rules again. As we mentioned, the current general guideline is that interest is credited up to age 58, even if the account is technically inoperative, but it's wise not to let accounts lie dormant for too long without transferring or settling them. When starting a new job, there's a Form 11. Yes, Form 11 is a declaration form. New employees fill it out. It helps the employer determine if you are already an EPS member, collects your UAN if you have one, and confirms whether you're eligible for EPS membership based on your joining salary and previous history. It helps link everything correctly. And filing actual claims, withdrawal, pension, etc., online versus offline. If your Aadhaar, PAN, and bank account are linked and verified with your UAN, you can file most claims online using the composite claim form available on the portal. It's faster and simpler. And if KYC isn't complete? Then you'll likely have to use the physical offline forms the composite claim form, Aadhaar or non-Aadhaar versions. Form 10C for withdrawing pension contribution or getting a scheme certificate, Form 10D for claiming monthly pension, Form 13 for offline transfer, Form 2 for physical nomination, though less common now, and Form 11 as mentioned. And for bank KYC verification, what proof do they need? Usually you need to upload a scanned image of either a check leaf with your name pre-printed on it, or the first page of your bank passbook, or a bank statement. It must clearly show your name, the full account number, and the bank's IFSC code. Okay, that covers a lot of the key procedures. What about workers coming from other countries or Indians working abroad? Right, international workers. India has signed Social Security Agreements, or SSAs, with quite a few countries. How many? Around 20 signed, with 19 currently in effect, I believe. And what do these SSAs do?
They offer key benefits. One is detachment, meaning if a worker is sent from an SSA country to India, or vice versa, for a limited period, they might continue contributing only to their home country's social security system and be exempt here. Avoids double contribution. Exactly. The other major benefit is totalization. This allows you to combine your periods of contribution in both countries to meet the minimum eligibility requirements for benefits like pensions, so you don't lose out because your work history is split. Which countries have these agreements with India? Oh, quite a list. Belgium, Germany, Switzerland, Denmark, Luxembourg, France, South Korea, Netherlands, Hungary, Finland, Sweden, Czech Republic, Norway, Austria, Canada, Australia, Japan, Portugal, Quebec, among others with effective agreements. What about workers from countries without an SSA? If a foreign national comes to work in India from a country that does not have an SSA with India, they generally are required to contribute to the EPFO, provided they meet the usual eligibility criteria. Any exceptions? Yes, nationals from Nepal and Bhutan are treated essentially the same as Indian workers for EPFO purposes. They don't fall under the specific international worker contribution rules. And this certificate of coverage? The COC. If you're coming from an SSA country to work in India temporarily, you might get a COC from your home country's Social Security Authority. This certificate proves you're still covered there, allowing you to be exempt from contributing to EPFO here under the detachment provision. And vice versa, if an Indian goes to an SSA country. Yes, the EPFO can issue a COC for an Indian worker being posted to an SSA country, potentially exempting them from Social Security contributions in that host country. Okay, useful for internationally mobile employees. Finally, what if things go wrong? You have a problem, a complaint. Grievance redressal. Yes, EPFO has several channels for this. Like what? The main online platform is EPFIGMS, the EPFO Grievance Management System. You can register and track complaints there via the EPFO website. Anywhere else online? You can also use CP-DRAMS, which is the central government's main public grievance portal. Complaints filed there related to EPFO get routed accordingly. And of course, every regional EPFO office has official email IDs listed on the website for contact. Is there anything more direct, like in person? Yes, there's a monthly program called Niti Aapke Nikat. PF near you. Exactly. It's held usually on the 10th of every month or next working day at all EPFO field offices. It's a platform for members, employers, pensioners to raise grievances directly, get information, and even offer suggestions. So a chance for face-to-face interaction. Yes. Plus, they also have things like a WhatsApp-based helpline service in many regions, and they conduct regular webinars for different groups, employers, employees, pensioners, to provide updates and address common issues. So multiple avenues exist if you need help or have a complaint. Definitely. They encourage using the system. Okay, we've covered a huge amount of ground here. As we sort of wrap up this deep dive into the EPFO, let's just quickly hit the main takeaways. Good idea. What stands out most? For me, number one is understanding that UAN, your universal account number, and the absolute necessity of getting your KYC sorted. Aadhaar, PAN, bank account linked and accurate. That's your key. Totally agree. And then knowing the difference between the three core schemes. EPF for your main savings, EPS for that long-term pension, and EDLI for the insurance cover. Understand what each does. Right. Also, being aware of your own responsibilities as a member. Checking your passbook, keeping details safe, transferring your PF when you change jobs, filing that e-nomination. You have a role to play. Yes. And finally, knowing the rules around withdrawals, both the partial advances for specific needs during service and the process for final settlement or transfer. Knowing when and how you can access funds is important. We really hope this detailed discussion, aiming to be that comprehensive resource, has, demystified things a bit, giving you a clearer, more confident picture of the EPFO landscape. That's the goal, to make this complex system feel more accessible and understandable for everyone relying on it. Absolutely. And try to see this knowledge not as like just more rules to learn, but as a genuinely valuable tool. It empowers you to manage and secure your own financial future. Well said. So the call to action is, if you haven't already, activate your UAN. Get those KYC details linked and verified. File your nomination seriously, do it, and get into the habit of checking your online passbook regularly. And for the latest, most accurate details, always refer back to the official source. Exactly. The official EPFO website, ipfindia.gov.in, and the UMANG app are your best resources for current rules, forms, and calculators. Keep them handy. We hope this deep dive has equipped you with the clarity and confidence you need. Thanks for joining us. – . . 。  – 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
नमस्ते। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेजों और जानकारियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ नमस्ते। ये जो हमारे पास नोट्स और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके आधार पर। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ईपीएफओ की जो मुख्य योजनाएं हैं उनके फायदे और हम सबकी मतलब सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। सही बात। और ये भी कि ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन है और केवाईसी डिटेल्स जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ये इतने जरूरी क्यों हैं? हाँ, और कैसे हम सदस्य लोग ऑनलाइन सेवाओं का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। हाँ। अक्सर लोग यही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ईपीएफओ असल में है क्या? ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम है, जिसमें मुख्य रूप से 3 योजनाएं आती हैं ना। हाँ। एक तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना 1952 वाली, हाँ। फिर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 और तीसरी है कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा मतलब ईडीएलआई योजना 1976 की। अच्छा, और इन सब का सेंटर पॉइंट वो यूएएन ही है, वो 12 अंकों वाला नंबर। वही, वो परमानेंट नंबर जो हर सदस्य को मिलता है। लेकिन सिर्फ मिलना काफी नहीं है, उसे एक्टिवेट भी करना पड़ता है। हाँ, एक्टिवेट करना और अपनी केवाईसी डिटेल्स आधार, पैन और बैंक खाता नंबर उससे जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। इससे पहचान पक्की होती है और ऑनलाइन काम भी आसानी से होते हैं। बिल्कुल, पहचान भी पक्की होती है और ऑनलाइन सेवाओं का दरवाजा भी यही खोलता है। अगर केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो क्लेम अटक सकता है, ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है, मतलब बेवजह की देरी। हाँ, और एक बात और जो शायद कम लोगों को पता हो, पैन को यूएन से लिंक करने पर टैक्स में भी कुछ फायदा मिलता है जब ईपीएफ निकालते हैं। सही, ये छोटी बात लगती है पर काम की है। और ये भी कि नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ये सब जानकारी सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसी हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कई बार इसी चक्कर में क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। अब सदस्यों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे यूएएन मिलते ही उसे फौरन एक्टिवेट कर लेना चाहिए। और पासवर्ड वगैरह किसी को बताना नहीं है ना? ओटीपी भी कभी नहीं, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। और रेगुलर अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ हो तो पता चल जाए। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर किसी के पास एक से ज्यादा यूएएन आ गए हों, मान लीजिए पुरानी नौकरी का अलग, नई का अलग। अच्छा, ऐसा भी होता है? हो जाता है कभी कभी, तो उन्हें जल्द से जल्द जो सबसे नया यूएएन है उसमें मर्ज करवा लेना चाहिए, वरना बाद में हिसाब किताब में मुश्किल होती है। समझ गई। और एक और बात जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं, पीएफ खाते को सेविंग अकाउंट की तरह नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका मेन मकसद बुढ़ापे के लिए या बहुत जरूरी पड़ने पर ही इस्तेमाल करना है। लॉन्ग टर्म सेविंग है ये। तो एडवांस या पैसा निकालना वो सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए, जैसे योजना में बताया गया है। हाँ, जैसे घर बनाना है, कोई गंभीर बीमारी का इलाज है, बच्चों की पढ़ाई या शादी, या फिर नौकरी चली गई हो, ऐसी स्थितियों के लिए ही। और फ्रॉड से बचने के लिए आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं। उसका एक ही तरीका है, हमेशा सिर्फ ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट जो है epfindia.gov.in या फिर सरकार का यूमंग ऐप, बस इन्हीं का इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक या फोन कॉल पे भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, अपनी पर्सनल जानकारी कभी शेयर न करें। चलिए अब थोड़ा फायदों पर बात करते हैं। क्या मिलता है इन योजनाओं से? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, ईपीएफ योजना में सदस्य नौकरी के दौरान कुछ खास वजहों से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की घर, इलाज, पढ़ाई, शादी। हाँ, और बेरोजगारी भी। ये पैसा वापस नहीं करना होता। और रिटायरमेंट के ठीक 1 साल पहले आप अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी सुविधा है। और पेंशन योजना ईपीएस का क्या? ईपीएस की खास बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। सच में? फिर पैसा कौन देता है? वो एम्प्लॉयर और सरकार का हिस्सा होता है। अगर आपने कम से कम 10 साल नौकरी की है और 58 साल के हो गए हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। हर महीने? हाँ, हर महीने कम से कम 1000 रुपए तो मिलेगी ही। ये बुढ़ापे में एक सहारा बन जाती है। और वो तीसरी योजना ईडीएलआई, वो बीमा वाली? हाँ, ईडीएलआई मतलब एक तरह का जीवन बीमा। अगर किसी सदस्य की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को एक मुश्त पैसा मिलता है। कितना मिलता है लगभग? 15 फरवरी 2018 के बाद से ये रकम 2.5 लाख से 7 लाख के बीच है। ये मुश्किल वक्त में परिवार के बहुत काम आती है। और अच्छी बात यह है कि आजकल ये सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं, पासबुक देखना, क्लेम करना। हाँ, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हैं। ईपीएफओ मेंबर पोर्टल है, उमंग ऐप है।
आप अपनी पासबुक देख सकते हैं, पीएफ निकालने या एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करना, नॉमिनी बदलना या जोड़ना, मतलब ई नॉमिनेशन। हाँ, ई नॉमिनेशन भी। और ये ई नॉमिनेशन बहुत जरूरी है ताकि बाद में परिवार को पैसा मिलने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसके लिए वो जरूरी है ना, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना? हाँ, वो अनिवार्य है क्योंकि सारे ओटीपी उसी पर आते हैं। तो अगर हम सार निकालें तो ईपीएफओ एक बहुत अच्छा सामाजिक सुरक्षा कवच है। लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें, मतलब सदस्यों को, जागरूक और एक्टिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल। यूएन संभाल कर रखना, केवाईसी टाइम पर अपडेट करना, ऑनलाइन सेवाओं का सावधानी से इस्तेमाल करना, ये सब बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए, क्या हमें भविष्य निधि को सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचाई गई रकम के तौर पर ही देखना चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर जैसे जिंदगी में जरूरतें बदलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसके जो एडवांस या थोड़े पैसे निकालने के नियम हैं, उनको समझना और जरूरत पड़ने पर सही ढंग से जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। इस पर सोचना चाहिए। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਈਪੀਐਫਓ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल। बिल्कुल ते ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੀਐਫ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਯੂਏਐਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਏਐਨ ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਏਐਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਏਐਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣੇ ਹੋਣ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਯੂਏਐਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1995 EPS 95 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, EPS 95 ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ PF ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਵਿਧੁਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਧੁਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 25% ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ 2 ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਨਾਥ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 75% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 750 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 2 ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ EPFO ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ PF ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ EDLI ਬੀਮੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਰਿਸ ਯਾਨੀ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, EPFO ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ EPFIGMS ਯਾਨੀ EPFO ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ? ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ WhatsApp ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਨਿਧੀ ਆਪਕੇ ਨਿਕਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ EPFO ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ UAN ਐਕਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣਾ, KYC ਪੂਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਟਾਫਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਬੰਦ? ਜੀ ਹਾਂ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਬਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आज हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ उस पर बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो मुनज्जम शोबे के लाखों कारकुन हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बहुत अहम निजाम है। जी बिल्कुल। इसमें बुनियादी तौर पर 3 स्कीमें हैं, ठीक? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ 1952, फिर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 और एक वो इंश्योरेंस वाली ईडीएलआई 1976। जी, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो आज का हमारा मकसद ये है कि इन स्कीमों के जो अहम फायदे हैं और खास तौर पर जो नई ऑनलाइन सर्विसेज आई हैं और मेंबर्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको थोड़ा आसान जबान में समझें। जी, खास तौर पर ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और ऑनलाइन पोर्टल, मुझे लगता है आजकल ये बहुत अहम हो गए हैं। यकीनन ईपीएफओ तो करोड़ों खानदानों को माली तहफ्फुज देता है और आपने सही कहा, यूएएन और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने तो इनकलाब ला दिया है। अच्छा, कैसे? अब मेंबर्स को अपने आजर पर मतलब इन्हिसार नहीं करना पड़ता। वो बराह रास्त अपने फंड्स, अपनी तफसीलात सब कुछ खुद देख सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं। पहले ये बड़ा मसला था। सही। तो ये यूएएन जो है 12 हिंदुस्तान का नंबर, ये एक तरह से मुस्तकिल शनाख्ती नंबर है हर मेंबर का। जी बिल्कुल, एक मुनफरिद और मुस्तकिल नंबर। और ये ऑनलाइन सर्विसेज का गेटवे कैसे बनता है? देखिए, इसकी असल ताकत तब सामने आती है जब इसे आप केवाईसी से लिंक करते हैं। केवाईसी यानी? अपने कस्टमर को जाने, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की तफसीलात। जब ये यूएएन से जुड़ जाती है ना जी, तो फिर मेंबर ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल से या वो जो उमंग ऐप है हुकूमत की, हाँ हाँ उमंग ऐप, जी, उसके जरिए बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। अपनी पासबुक देख लें, पीएफ निकालना हो, एडवांस चाहिए, पेंशन का क्लेम करना हो, सब ऑनलाइन, यानी घर बैठे। बिल्कुल। अपनी केवाईसी तफसीलात भी अपडेट कर सकते हैं और बहुत अहम ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पहला और सबसे जरूरी कदम तो ये हुआ कि अपना यूएएन लें और उसे फौरन एक्टिवेट करवाएं। जी बिल्कुल, उसके बगैर आप ईपीएफओ की डिजिटल दुनिया से बाहर है। ठीक है। यूएएन एक्टिवेट करने के बाद मेंबर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? जी, ये भी अहम है। सबसे पहले तो बाकायदगी से ऑनलाइन जाकर अपनी जमाशुदा रकम यानी बचत चेक करते रहें कि पैसा जमा हो रहा है या नहीं। जी बिल्कुल। और अपना पासवर्ड और मोबाइल पर जो ओटीपी आता है वो किसी से शेयर ना करें। ये बहुत खुफिया मालूमात हैं। सही। अगर आपको लगे कि आपकी माहाना कटौती जमा नहीं हो रही है या कोई और गड़बड़ है तो फौरन अपने आजर को बताएं। ये बात भी अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पीएफ अकाउंट को आम बैंक अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार पैसे निकालना? नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, पीएफ का जो बुनियादी मकसद है वो है लंबी मुद्दत की बचत और रिटायरमेंट के बाद आपको माली तहफ्फुज देना। अगर आप इसे बार बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो जो कंपाउंडिंग का फायदा होता है ना, सूद पर सूद मिलने का, जी जी, वो खत्म हो जाता है और लंबी मुद्दत में ये लाखों का नुकसान हो सकता है। एडवांस सिर्फ बहुत जरूरी हो तब, और वो भी जो स्कीम में वजूहात बताई गई हैं, जैसे घर बनाना, बीमारी का इलाज, अच्छा, सिर्फ तब लेना चाहिए। और अगर नौकरी बदल जाए, अक्सर लोगों के पुराने पीएफ अकाउंट्स रह जाते हैं, उनका क्या करें? ये बहुत जरूरी है। जब भी नौकरी बदलें, अपना पुराना पीएफ बैलेंस और जो सर्विस की मुद्दत है उसे नए आजर के पास जो अकाउंट खुला है उसमें ट्रांसफर करवाएं। यूएएन से ये आसान हो गया है? जी, यूएएन की वजह से अब ये बहुत आसान हो गया है।
और अगर कभी गलती से एक से ज्यादा यूएन बन गए हों तो उन्हें फौरन अपने सबसे नए वाले यूएन में जम यानी मर्ज करवा लें। ठीक है, और आपने ई नॉमिनेशन का जिक्र किया है, वो भी जरूरी है? बहुत जरूरी, बल्कि अब लाजमी है। उस पर हम आगे बात करेंगे। चलें, अब जरा पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 पर आते हैं। ये कैसे काम करती है? ये तो लंबी मुद्दत का फायदा है। जी, ईपीएस का मकसद है कि जब आप रिटायर हों बुढ़ापे में तो एक मुस्तकिल आमदनी यानी पेंशन मिलती रहे। अच्छा। इसमें कई तरह की पेंशन है। सबसे आम है माहाना मेंबर पेंशन। ये तब मिलती है जब आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस हो गई हो और उम्र 58 साल हो जाए। कम से कम 1000 रुपए माहाना पेंशन तो मिलती ही है। और अगर खुदा न खास्ता मेंबर की वफात हो जाए दौरान सर्विस या पेंशन लेते हुए, तो इस सूरत में उनकी बेवा या रंडवे को पेंशन मिलती है। वो मेंबर की पेंशन का 50% होती है या कम से कम 1000 रुपए, जो भी ज्यादा हो। और बच्चों के लिए? जी, उनके बच्चों को भी पेंशन मिलती है 25 साल की उम्र तक, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए। और अगर कोई बच्चा माजूर है तो उसे जिंदगी भर मिल सकती है। यतीम बच्चों के लिए भी खास इंतजामात हैं। और इस पेंशन के लिए क्या मुलाजिम की तनख्वाह से भी कुछ कटता है? नहीं, ये अहम बात है। पेंशन के लिए मुलाजिम की तनख्वाह से कोई हिस्सा नहीं जाता। ये आजिर का हिस्सा और हुकूमत हिंद का हिस्सा मिलकर बनता है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वापस आते हैं पीएफ पर। अगर नौकरी चल रही है और पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या कुछ पैसे निकाल सकते हैं, जिसे पार्शियल विड्रॉल कहते हैं? जी हाँ, कुछ खास और बड़ी जरूरतों के लिए पीएफ से कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है और ये वापस नहीं करना होता। अच्छा, किन जरूरतों के लिए? मिसाल के तौर पर मकान बनाने या खरीदने के लिए, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल की मेंबरशिप जरूरी है। ठीक है। अगर कोई संगीन बीमारी है, अपना या खानदान का इलाज करवाना है, तो उसके लिए सर्विस की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। और बच्चों की शादी या पढ़ाई? उसके लिए 7 साल की मेंबरशिप चाहिए। हर केस में कितनी रकम निकाल सकते हैं और क्या शराइत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, वो पोर्टल पर मिल जाती हैं। ठीक है। और आखिर में ई नॉमिनेशन, आपने कहा था ये अब लाजमी है, क्यों? जी हाँ, ई नॉमिनेशन यानी ऑनलाइन नॉमिनेट करना कि आपके बाद पैसा किसको मिले, ये अब लाजमी है। पहले वो कागज का फॉर्म 2 होता था, अब ये ऑनलाइन होता है मेंबर पोर्टल से। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मेंबर की अचानक वफात हो जाए तो उनका जमा शुदा पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा उनके नामजद करदा रिश्तेदारों को, मतलब बीवी, बच्चों या जिसे भी नामजद किया हो, उनको बहुत आसानी से और जल्दी मिल जाता है। यानी परेशानी नहीं होती? जी, पहले इसमें बहुत वक्त लगता था, कागजी कार्रवाई होती थी, खानदान को बहुत मुश्किल होती थी। अब ये अमल बहुत सादा हो गया है। इसमें कोई और अहम बात याद रखने वाली? एक बहुत अहम बात, अगर आपकी शादी होती है तो शादी से पहले की गई कोई भी नामजदगी खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है। ओह, ये तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। जी बिल्कुल, तो शादी होते ही फौरन नई ई नॉमिनेशन फाइल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीक हयात कानूनी तौर पर नामजद हो जाए। ये भी ऑनलाइन पोर्टल से आराम से हो जाता है। जबरदस्त। तो अगर हम सारी बातचीत का खुलासा करें तो ईपीएफओ एक बहुत ही, क्या कहते हैं, जामा समाजी तहफ्फुज का निजाम है ना? जी बिल्कुल। यूएन और ऑनलाइन सर्विसेज ने मेंबर्स को काफी बाइख्तियार बना दिया है, लेकिन साथ ही ये मेंबर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी तफसीलात जैसे केवाईसी अप टू डेट रखें, पासवर्ड महफूज रखें, ई नॉमिनेशन बर वक्त करें और पीएफ को बैंक अकाउंट न समझें बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं लेकिन मुस्तकबिल में ये बहुत काम आती हैं और बड़ी परेशानियों से बचाती हैं। इससे ये यकीनी बनता है कि आप और आपका खानदान ईपीएफओ के जो असल फवायद हैं उनसे पूरी तरह मुस्तफीद हों। और आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ईपीएफओ का ये निजाम बनाया तो गया है लंबी मुद्दत के माली तहफ्फुज के लिए, खास तौर पर बुढ़ापे में सहारे के लिए, लेकिन आजकल जो रुझान बढ़ रहा है कि फौरी बाज़ौकात गैर जरूरी जरूरतों के लिए भी पीएफ से पैसा निकाला जा रहा है, क्या ये इसके बुनियादी मकसद को ही कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा? इस पर जरूर सोचिएगा।
Welcome to the deep dive. Today, we're really getting into the weeds with the Employees Provident Fund Organization, the EPFO. That's right. We've got a stack of documents here, the all notes, the employer information booklets in English and Hindi, the FAQs. Exactly. And our mission really is to unpack all of it. We want to create a complete audio guide, something that covers PF, EPS, EDLI, everything you need to know, whether you're an employer or an employee. And make it super clear, straightforward, like this audio could basically stand in for reading all those PDFs. That's the goal. And one thing that just jumps out immediately from all these sources is the big push towards digital. Oh, definitely. Everything's moving online. Registration, claims, KYC. Yeah. It's a major theme. We'll see that pop up again and again. It really changes how you interact with the EPFO. For sure. So we'll cover the whole life cycle from setting up an establishment, getting registered, managing contributions, member benefits, claims, even stuff like international workers. It's pretty comprehensive. It really is. By the end, you should feel like you've got a solid handle on the whole EPFO world. Okay, let's kick things off at the beginning. Establishing coverage, getting registered. Form 5A seems to be ground zero. Yes, Form 5A, the return of ownership. That's pretty much the first official step for an establishment to get covered under the PF schemes. It's the starting point for everything that follows, digitally speaking. Absolutely. It lays that foundation. You're telling the EPFO who's legally responsible, the owners, partners, directors. Right. And the Hindi booklet had a useful point there about ownership versus management. It clarifies that while Form 5A names the legal owners, the day-to-day running of the place can be handled by someone else, like a manager. It separates that accountability. Good distinction. So after you get your PF code, how do you actually submit this Form 5A? Is it paper? Nope, it's all online now. You log into the employer portal, find the section for Form 5A, and you submit it there. And you need that digital signature. Exactly. It requires either a digital signature certificate, a DSC, usually on a USB token, or an e-sign. That's your secure, legal way of signing off digitally. Okay. What if a company has, say, multiple offices or branches? How does that work with Form 5A? You include the details of all branches right there in the initial Form 5A submission. Then later, there's another section on the portal. Ah, right. Under establishment, then branches. Correct. That's where you can give more specifics about each branch, and if you need one, get a separate subcode number for it. Uses Form 2A for that part. Got it. So these digital signatures, DSC and e-sign, are clearly vital. Let's break down how you get them set up. The DSC process sounds a bit involved. It is a mix of online and offline. You start online in the establishment login under DSC sign, choose digital signature registration. That generates a letter. Right, a request letter. You download that, print it on your company letterhead, the DSC holder signs it, and then here's the offline part. You submit 2 copies physically to your PF office. Physically. Okay, so not fully digital yet for the setup. Not for that initial approval, no. They need that physical signed letterhead. And there's also an option online to revoke a DSC if needed. Makes sense. Are there technical hurdles, like specific software needed to use the DSC? Yes, the English booklet mentions some specifics. Ideally, you need Mozilla Firefox version 48.0 and the latest 32-bit Java. 32-bit, okay. Yeah, and you also have to add certain EPFO portal URLs to the Java security exceptions list in your control panel. It's quite specific to ensure it works correctly and securely. Right. Those technical details are important to get right. Good to know. Now, e-sign, you mentioned there are different ways to register for that. Correct. Depends if you already have a DSC registered with EPFO. If you do, the process is similar. Go to e-sign registration, select the option for existing DSC holders, generate the letter, sign it. And submit it physically in duplicate? Exactly. Same physical submission step as the DSC registration. Okay, and for people without a DSC who want to use e-sign? For them, you choose the e-sign registration option, but then you provide Aadhaar-based details. Your name, as per Aadhaar, designation, gender, date of birth, and your VD number, the virtual ID. Ah, Aadhaar verification. Right. That generates the request letter, and again, print, sign, and submit 2 copies physically to the PF office for approval. So bottom line for both DSC and e-sign registration, there's still that final physical submission step involved for now. Seems so, yes. For the initial setup, at least. Okay, let's shift gears to KYC, Know Your Customer. Huge part of the process. What's the employer's main job here? The employer plays a really critical role. They need to update employee details and file their KYC info. Through the establishment login, they go to member, then member profile, search by UAN. Find the employee. Right.
Then under KYC, they can add KYC, typically Aadhaar and bank details, save that. But then, crucially, it needs approval. Another approval step. Yes. Under member, then approve KYC, seated by member. Yeah. And that approval step needs the employer's DSC or e-sign again. It's a check and balance. Definitely sounds like it. And the EPFO stresses keeping these profiles complete and up to date generally, right? Absolutely. They want comprehensive, current profiles for everyone. There's even a missing details option employers can use to find gaps. Good tool. And importantly, the employer has to mark the date of exit for employees when they leave. That's their responsibility too. Okay. Can employees do any of this KYC seeding themselves? Like adding their own Aadhaar? Yes, they can. Two main ways. They can go directly to the EPFO website, find the EKYA portal under online services that uses an OTP verification. Okay. Or they can log into their own member EOSO portal, go to manage, then KYC add, and put in their Aadhaar and bank details there. But does the employer still need to approve it? Yes. Even if the employee seeds it themselves, it always requires that final employer approval using their DSC or e-sign. So the employer is always the final gatekeeper for KYC approval. How do employers keep track of what's waiting for their approval? It's pretty visible on their portal dashboard. When they log in, there's an alert section right on the homepage. Ah, convenient. Yeah, it lists pending KYC approvals and also any member basic detail changes that need their review. It keeps it front and center. Good. And once it is approved, where does that show up? The employee will see the updated status in their member eSIWA portal, and the employer will see it reflected in their active member list on the establishment portal as well. Okay, makes sense. Now, the UAN universal account number keeps coming up. Let's just clearly define what that is. Sure. The UAN is basically a unique, permanent number given to every employee contributing to the EPF. Think of it like your PF Social Security number. Stays with you even if you change jobs. Exactly. It's the anchor for your entire EPF history across all employers. And all this KYC data, Aadhaar bank account, gets linked directly to the UAN. Precisely. That linkage is what enables most of the online services. It connects your verified identity to your PF account. And employees need to activate their UAN and set a password. Yes. Once they get their UAN, they go online to activate it and create a password for their member portal access. There are password reset options too, usually via mobile OTP. And the notes mention something about recovering a password even with a new mobile number. Right. If your Aadhaar and PAN are already linked to the UAN, the system gives you an option to recover your password using a new mobile number, which is helpful if you've lost access to the old one. So having an activated UAN with linked verified KYC is really the key to unlocking online services. What kind of services are we talking about? Oh, quite a few important ones. Seamless online PF transfers when you change jobs, much less hassle. Submitting claims online for withdrawals or pension, which generally gets processed much faster. And Aadhaar-based claims specifically require it. Absolutely. That whole process relies on the UAN being linked to your verified Aadhaar and bank details. And again, the employer has that verification role for the KYC linked to the UAN. Correct. They have to verify and approve the KYC details, whether the employee submitted them or the employer added them. They can do it individually or in bulk. Okay, it's all very interconnected. Let's switch to the money side contributions. Who has to contribute? So the rule is, it's mandatory for employees earning wages up to 15,000 rupees per month. That's the threshold. 15,000? What about people earning more? They can still join voluntarily. If you earn above 15,000, you have the option to become a member. Okay. And how are the contribution amounts figured out? Is it always on the full salary? The calculation is based on that wage ceiling of 15,000 rupees. So the mandatory contributions, both employee and employer share, are calculated on wages up to that limit. What if someone earns more and wants to contribute on their full salary? The employee can choose to contribute more voluntarily on their higher salary, but the employer is only obligated to match the contribution up to the 15,000 ceiling. Ah, okay. So the employer doesn't have to match the higher voluntary contribution. Correct. However, and this is important, the employer does have to pay the administrative charges on the employee's entire wage, even the part above 15,000, if the employee contributes on it. Got it. And the contributions are split, right? PF, pension, ED/LI. Yes. There's the main Provident Fund contribution both employee and employer pay into account number one. Then there's the pension contribution, EPS. That's just the employer's part. Mostly, yes. Yeah. 8.33% goes to pension, and that's solely the employer's responsibility, not deducted from the employee's PF share.
There are exceptions, like for people joining after 58 or reemployed pensioners. Okay. And EDLI? That's the Employees Deposit Linked Insurance. Account number 21. That's also paid only by the employer, and it's calculated on the 15,000 wage ceiling, even if UPF is paid on a higher amount. Right. When are these contributions due each month? Deadline is the 15th of the following month, so July's contribution is due by August 15th. It's all done online via the ECR filing. ECR, Electronic Child Income Return. Exactly. And the amounts are rounded to the nearest rupee. Are there any other fees employers need to pay? Inspection charges. Yes, unless the establishment is exempt, there are inspection charges. It's a small percentage, 0.005% of total wages with a minimum of 1 rupee. Goes into account number 22. Seems like a lot to keep track of. What if an employer deducts PF but doesn't actually deposit it? That's taken very seriously. The documents state it's a criminal breach of trust. There are significant legal penalties. Employers have a strong fiduciary duty there. A very serious obligation. And just to confirm that ECR is the standard online way to file and pay monthly contributions now. Yes, absolutely. The ECR is the mandatory online process for monthly contribution filing and payment. Okay, let's talk about accessing these funds. Member claims and benefits. What's the employer's role when an employee needs to file a claim? They have a duty to assist, especially with online claims, since having Aadhaar and Bank KYC seated is mandatory for online filing and really speeds things up. Employers should help employees navigate that. So, encouraging and helping with online claims is key. What about transfers when someone changes jobs? If the employee files the transfer claim online, it goes straight to the EPFO and is trackable. If they use the old paper Form 13, the employer has to verify it and then submit it to the PF office. Online is much smoother. Makes sense. Now, retirement benefits. What does EPFO provide when someone retires? 2 main things. First, they get their full accumulated PF balance, that lump sum. Second, under the pension scheme, EPS, there are various monthly pensions. Like for the member themselves? Yes, member pension, also widower pension, child pension, orphan pension, even dependent parent pension in some cases. And there's a minimum pension guarantee of 1,000 rupees a month currently. Okay. And the EDLI scheme, that's the insurance part. Right. Employees deposit linked insurance. It's life insurance linked to your PF balance. If an employee passes away while in service, their family gets a lump sum payout. The maximum benefit right now is 6 lakh rupees. 6 lakhs. Are there situations before retirement where you can withdraw PF funds, non-refundable advances? Yes, quite a few. For major life events or needs. Things like serious illness, marriage expenses for self or family, children's education, buying or building a house. What else? Also, periods of unemployment, damage from natural calamities if your electricity gets cut off, or for purchasing equipment if you're physically handicapped. And closer to retirement. Yes, you can withdraw up to 90% within a year of retirement. And during unemployment, after 1 month, you can potentially withdraw up to 75% of the balance. Okay, lots of specific conditions there. For the regular pension, what makes you eligible? You need to reach superannuation age, which is 58, and have at least 10 years of pensional service. 10 years is the key service length. It is. You can also opt for a reduced pension earlier, between age 50 and 57, if you still have those 10 plus years of service. How is the actual pension amount calculated? It's based on a formula using 2 things. Your average pensionable salary over your last 60 months of service and your total number of years of pensionable service. And individuals can't opt out of the pension scheme, only whole establishments can seek exemption. Correct. It's an establishment level decision, usually involving setting up a private trust. Individual employees don't have that choice. Can you delay taking your pension past 58? Yes, you can choose to defer it. If you delay starting your pension, you might get a slightly higher monthly amount when you do eventually start drawing it, based on the deferment period. Let's talk family pension again. If the member passes away, who gets it? Primary beneficiary is the spouse, or a widower. Then eligible children get a child pension, usually up to age 25, limited to 2 children receiving it at once. What about disabled children? A permanently disabled child can receive the pension for life, in addition to up to 2 other children. And if there's no spouse or eligible children, then dependent parents can receive it. What if a member becomes disabled while working? Is there a pension for that? Yes. Under EPS 95, if you become permanently and totally disabled during employment, you're eligible for a disablement pension. This doesn't depend on your age or how long you've served. You typically need a medical board assessment, though. Okay. What's this scheme certificate or Form 10C? Ah, that's important.
If you have 10 plus years of pensionable service, but you leave employment before age 58, you must take this scheme certificate Why is it mandatory? because it preserves your pensionable service record. It allows you to carry forward that service and add it to any future service to qualify for pension later. It stops you from losing that benefit. Crucial document then. And pensioners need to submit a life certificate. Yes, annually, usually. To prove they're still alive and eligible, it needs attestation, typically from a bank manager or gazetted officer, or they can use the digital life certificate DLC option now using AHA biometrics. Much more convenient. Can you get multiple pensions for the same service? No. The rules say only one pension per member or family for the same period of service under EPS 95. What if the employer hasn't paid their contributions? Does that stop the employee from getting benefits? For withdrawal benefits, yes. They might be withheld for the period of default while EPFO tries to recover from the employer. But for pension entitlement itself, the FAQ's state employer default doesn't stop the pension grant. That's reassuring. And this PRIA's initiative, what's that about? PRIA's is EPFO trying to get pensions paid out on the day of retirement. They work with employers and soon-to-retire employees to get claims submitted well in advance, so the pension payment order, PPO, is ready on day one. That's a great goal. Very proactive. Okay, let's switch focus to international workers and Social Security agreements, SSAs. Right. First off, international workers, Indians working abroad, foreigners working in India are covered by the EPF Act. And the purpose of these SSAs India has with other countries? Primarily to avoid double Social Security contributions. If you're sent to work temporarily in an SSA country, the agreement might allow you to keep paying into India's system, EPFO, and be exempt from the host country's system for a certain period. That period is the detachment period. Exactly. During detachment, you remain covered by your home country's scheme. The length varies by agreement. What other benefits do SSAs offer? Key things are avoiding double coverage, allowing portability of pension benefits, meaning you might combine service from different SSA countries to qualify for pension, totalization of benefits, which is similar, and ensuring equal treatment for workers from both countries. What about workers from countries without an SSA with India? If they're working in India and meet the EPF criteria, they generally have to contribute as international workers, no exemption. And a special note on Nepal and Bhutan nationals. Yes, due to specific treaties, they are treated as Indian workers for EPF purposes, not international workers. Got it. And the certificate of coverage, COC, what does that do? A COC is issued by an SSA partner country. If a worker comes to India from, say, Germany with a German COC, it proves they're covered by the German system. India then exempts them from contributing to EPFO for the detachment period. And EPFO issues COCs for Indians going abroad. Correct. If an Indian worker goes to an SSA country, EPFO can issue a COC, so they might be exempt from the host country's Social Security contributions while paying into EPFO. Yeah. It prevents that double payment. Okay, that clarifies the international aspect. Now, back to employer responsibilities within India. What are their core duties? Number one is enrolling all eligible employees. That includes contract workers. Either the principal employer enrolls them or ensures the contractor does and updates the contractor's PF code on their portal. Failure to enroll is a serious issue. Undermines the whole system. Right. And as we said, assisting members with claims withdrawals, transfers, final settlements, and helping families with death claims, EDLI, pension. And using the official website for everything. Yes, the booklet directs all PF business through www.ipfindia.gov.in. The Hindi booklet also had a warning about login credentials. A basic but crucial point. Keep your establishment login details confidential. Don't share them. Prevent misuse. Standard security practice. Okay, good reminders. Now, the FAQ document is massive. Let's hit some common questions people have. Is there a waiting period to withdraw PF after quitting a job? Yes, specifically for resignation. You generally have to wait 2 months after leaving before you can withdraw the full PF amount. This doesn't apply to retirement superannuation. What if your employer won't sign your withdrawal form? You have an option. Get it attested by your bank manager instead. Submit that to the Regional PF Commissioner, RPFC, with an explanation. Or, even better, if your UAN is active and KYC, that's a Tata Bank, is linked and approved. You can use the composite claim form, a la carte. Exactly. That one doesn't need employer attestation. You can submit it yourself. How do you transfer PF when you change jobs? You should initiate a transfer. You can use the physical Form 13, but the easier way now is online transfer through the member portal via your UAN. Much faster.
What if your old company was exempt, had its own trust, and now isn't? What happens to your money? If the exemption is canceled, the RPFC steps in, ensures the funds held by the trust are transferred or refunded correctly to the members. If you move between branches of the same company, do you need to re-enroll for PF? Technically, yes. If the new branch is considered a separate establishment with its own PF code, you'd enroll there, then transfer your balance from the old branch's account. Can you be a PF member if you're not getting paid wages? No. PF membership requires payable wages. No wages, no basis for PF contribution. Can you join just the pension scheme, not PF? Nope. Pension scheme membership is tied to being an active PF contributing member. If a member dies, who gets the pension? Let's recap the order. Spouse first, widow, widower. Then eligible children, up to 2, usually up to age 25, but lifetime for permanently disabled children. If no spouse children, then dependent parents. Father first, then mother. Does it matter if the employer didn't pay their pension share? Will the employee still get pension? The FAQs say yes. The pension grant isn't affected by employers' non-payment of their share. EPFO ensures the benefit. Can a member legally stop their spouse from getting family pension? No, unless they are legally divorced before the member's death. Otherwise, the spouse is the default beneficiary. And disablement pension eligibility again? Permanent and total disablement during service for EPS 95 members. No minimum service or age needed, but requires medical confirmation. How long does a widower get pension? Until they remarry or pass away, whichever comes first. Scheme certificate, Form 10C, always mandatory if you have 10 plus years service, but leave before 58. Yes, it's mandatory in that situation to preserve your pension rights. Life certificate submission when and how often? Annually, usually 12 months after pension starts or the last certificate. Needs attestation, bank manager gazetted officer, or use the digital life certificate, DLC, via Aadhaar. Submit to the pension dispersing bank. Can orphans get double pension if both parents were EPS members? Yes, they can receive 2 separate pensions, one from each parent's account, subject to the overall scheme limits. Which claim forms don't need employer attestation? Form 19, final settlement, 10C, scheme certificate, and 31 advances if your UAN is active, and Bank Aadhaar KYC is linked and approved by employer via DSC. Uses the composite claim. Aadhaar. And the composite claim forms Aadhaar versus non-Aadhaar. Aadhaar version, online, offline, no employer signature needed if UAN KYC criteria met. Non-Aadhaar version, offline only, requires employer signature. Both consolidate various claims. Which forms for which purpose? Quick list. Okay. Final settlement advances, composite claim, Aadhaar or non-Aadhaar, scheme certificate form 10C, pension form 10D, transfer form 13 or online, nomination form 2, declaring previous service form 11. How do you submit claims? Online, if Aadhaar PIM bank linked and verified using composite claim, Aadhaar, or offline by submitting the physical paper forms to the EPFO office. How to update bank details? Through the member portal online. Upload new details, maybe cancel check scan, but the employer must approve the change online via their portal before it takes effect. Claims settlement time. EPFO aims to settle claims within 20 days of receiving a complete application. Forms 15G, 15H, what are they for? Self-declaration to avoid TDS on PF withdrawal if your total income is below taxable limits. 15H for seniors, 60 plus, 15G for others. Need PAN. Submit 2 copies with the claim. Which form for nominations? Form 2 for nominating family for PFPS Adilai. Do you always need a canceled check with claims? Generally, yes. Original canceled check with name account S printed. If no checkbook, use a copy of the passbook's first page with details, attested by employer or bank manager. That special advance for epidemics, pandemics, like COVID-19. Yes, a provision was added. Allows non-refundable advance. Can claim online if UAN validated with Aadhaar and KYC linked. Use portal or UMANG app, select outbreak of pandemic reason. You can claim up to 3 months basic plus DA or 75% of balance, whichever is less, but you don't have to take the max amount. When is a PF transfer really necessary? When you have multiple old PF count IDs with balances that haven't been moved to your current active account, you need to consolidate. What do you need to do an online PF transfer? UAN must be activated. KYC, Aadhaar Bank, complete and verified by previous employer. Date of exit updated, usually after 2 months. Employer approved eKYC. Only 1 transfer request per previous ID. Personal details and profile must match. And if you file online, no physical Form 13 needed. Correct. Online submission is sufficient. How to track the online transfer status? Log into member ESOA, go to online services, then track claim statuses. Shows if pending with employer, accepted, pending at field office, etc. Transfers involving exempted establishments, Right. private trusts.
Uses Annexure K. Yes. For exempt to unexempted, the trust submits Annexure K details online. Employer pays dues online. PF office approves. Amount service reflects in member's passbook. Annexure K details member info, accumulations, service history. Similar process other way around. EPS only transfer online is also possible for exempt members moving between unexempted. Big benefit of transferring is preserving service length for pension. Absolutely key benefit. Need 10 plus years total service for pension, so consolidating via transfer is vital. UAN registration activation strictly online only. Yes. No offline mode for UAN registration or activation. Can contract workers get a UAN and use online services? Yes. They're eligible just like regular employees. Can one mobile number link to multiple UANs? Yes. The system allows that. How to change the mobile number linked to your UAN? Log into the member portal, go to member profile. There's an option to change the linked mobile number. Usually involves OTP verification. Do you need your mobile linked to Aadhaar for online claims? Yes, because the authentication OTT for online claims is sent to the mobile number registered with Aadhaar. What if Aadhaar isn't linked to your mobile? You need to visit an Aadhaar Seva Kendra to get it linked. Check the UIDAI website, iida.gov.in, for info and locations. Password recovery recap. Use forgot password on login page, enter UN CAPTCHA, get OTP on registered mobile, reset password. If mobile inactive, might need to verify name DAB gender, then use Aadhaar verification to get OTP on a new mobile number. International workers and online advances, Aadhaar mandatory. Yes. For online PF advance claims, IWs need Aadhaar. If no Aadhaar yet, they can submit physical claim forms with employer attestation. Can employees demand contribution details from employers? Yes. They have a right to see their contribution card, Form 3A, or a copy of the ECR. Correcting data mismatches in old UANs for transfers. Needs correction via the previous employer associated with that old UAN first. Get details aligned, especially with Aadhaar. Then linking might be possible via eKYC portal. How to update date of exit if employer hasn't? Member can do it online via member portal after 60 days from leaving service. What if your UAN is wrongly linked to an unknown employer? Immediately contact the EPFO field office and report the error. Don't share UN Aadhaar unless it's for genuine current employment. Countries with SSA's examples and detachment periods. Belgium, 5 years. Germany, 4 years. Switzerland, 6 years. Denmark, 5 years. India, DK, 3 years. DK, India. Luxembourg, 5 years. France, 5 year. South Korea, 5 years. Many others. Periods vary by agreement. Nepal, Bhutan nationals treated as Indian workers. Correct, due to specific treaties. EDLI contribution wage ceiling still 15,000. Yes, EDLI contribution is based on max 15,000 wage ceiling. Acceptable documents for date of birth correction. Birth certificate, school records, passport, government service record certificate, other reliable Gov docs. Medical certificate plus affidavit as last resort. Aadhaar accepted if DOB difference is within plus minus or 3 years of EPFO record. PMGKY and Atmanar Bharat package details. COVID relief. PMGKY. Gov paid 24%. Employee plus employer share for eligible establishments, 100 employees, for May 2020. Atmanirbhar. EPF rate reduced to 10% from 12% from May, July 2020, excluding PSUs, PNGKY beneficiaries. TDS on PF withdrawals, key points. Effective date, threshold. Effective April 1, 2022, threshold. RS 2,050,000 total member contribution in previous year. Below this, usually no TDS. Applies to death cases, exempt trusts, IWs too. TDS rates, PAN versus no PAN. With PAN. 10% for resident members, no TDS if withdrawal, or DTAA rate for non-residents. Surcharge says DTA forms. No surcharges on TDS. US 194A for FY 21-22. Use Form F10FB for DTAA rates. TDS deposit deadlines, penalties, TDS certificates. Specific due dates exist for deposit. Interest penalties for non-deduction, non-deposit. TDS certificates Form 1616A, issued by specific dates. How to check employment history across jobs. Use the ePassbook facility on the member portal. It shows your detailed service history. Okay, this has been incredibly thorough. We've really dug deep into these documents. Yeah, the level of detail in the sources, especially the FAQs, is quite something. It covers so many specific situations. And the clear thread running through it all is that move to digital. Online processes are really central now. Absolutely. Understanding how to navigate the UAN portal, the importance of KYC seeding, online claims, that's crucial for both employers and employees today. Our goal here was really to create that comprehensive audio guide, pulling everything important from these documents into one place for you.
Hopefully it serves as a useful reference. You can always jump back to specific sections if you need a refresher on contributions or claims or international worker rules. Definitely. And remember, for very specific personal queries, the official EPFO website, epinfindia.gov.in, and their helplines are the best resources. Getting these things right matters for compliance if you're an employer and for your financial security if you're an employee. And perhaps the single biggest takeaway, looping back to the start, is keep that UAN active and your KYC details, especially Aadhaar and bank info, linked and up to date. That really is the foundation for smooth sailing with the EPFO system these days. It absolutely is. Thanks for joining us on this very detailed deep dive into the EPFO. खुशामदीद। आज हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के फराहम करदा मवाद का जरा गहराई में जाकर जायजा ले रहे हैं। कोशिश ये है कि इस निजाम की जो बारीकियां हैं, अहम नुकात हैं, उनको समझा जाए, जो शायद रोजमर्रा की मालूमात से थोड़ा आगे की बात हो। जी बिल्कुल। ईपीएफओ भारत में आप देखें तो लाखों मुलाजमों के लिए समाजी तहफ्फुज की एक बुनियाद है ना, जिसमें रिटायरमेंट की बचत है, पेंशन है और इंश्योरेंस भी शामिल है। आज हम उन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में इसके कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो बुनियादी बात तो ये है कि भाई 15,000 रुपए माहाना तक कमाने वालों के लिए ये लाजमी है, लेकिन इन दस्तावेजात में एक पैरा 26(6) का जिक्र भी है जो ज्यादा तनख्वाह पर शराकत की इजाजत देता है। तो इसकी क्या अहमियत है, मतलब ये क्यों खास है? जी, ये एक अहम नुक्ता है। देखिए, 15,000 की हद तो वो पुरानी है। अगर कोई ज्यादा कमाने वाला मुलाजिम है और वो और उसका आजर दोनों राजी हों कि भाई पूरी तनख्वाह पर शराकत की जाए, तो वो पैरा 26(6) के तहत दरखास्त दे सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा यह है कि रिटायरमेंट पर ज्यादा रकम जमा हो सकती है, लेकिन हाँ, इसका इतलाक थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है और इसके लिए बाकायदा दोनों की दरखास्त जरूरी है। समझ गया। और शराकत की शरह? वो 15% मुलाजिम और 12% आजर की तरफ से। जी हाँ, आजर के हिस्से का बड़ा हिस्सा यानी 8.33% वो तो पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है। क्या ये काफी समझा जाता है पेंशन के लिए? ये एक बहस का मौजू रहा है काफी अरसे से। 8.33% शराकत से पेंशन फंड तो बनता है, लेकिन पेंशन का जो हिसाब है वो आखिरी 60 महीनों की औसत तनख्वाह, जिस पर ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए की हद लागू होती है, जब तक कि ज्यादा शराकत ना की गई हो और सर्विस की मुद्दत पर मुनहसर है। और कम से कम पेंशन 1,000 रुपए है, जो आजकल की महंगाई में अक्सर लोग कहते हैं कि नाकाफी है। ये भी याद रखने की बात है कि पेंशन की शराकत 58 साल की उम्र के बाद नहीं होती। अच्छा। और ये तमाम शराकतें ये हर महीने की 15 तारीख तक जमा करवाना लाजमी है। अगर ताखीर हो जाए तो इसकी क्या नतीजे हैं? जी, ताखीर पर 2 तरह के जुर्माने हैं। एक तो है पेनल डैमेजेस, जो ताखीर की मुद्दत के हिसाब से बढ़ते हैं, और दूसरा है पेनल इंटरेस्ट, जो 12% सालाना की सादा शरह से लगता है। ओहो। ये दोनों मिलकर आजर पर काफी, आप कह लें, माली बोझ डाल सकते हैं। ठीक है। फवाइद की तरफ आए तो ईपीएफ तो बचत हो गई, ईपीएस पेंशन, और ईडीएलआई ये लाइफ इंश्योरेंस है। ईडीएलआई के बारे में कुछ बताएं। जी, ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये दौरान मुलाजमत अगर इंतकाल हो जाए तो नामजद शख्स को मिलता है। फिलहाल इसकी ज्यादा से ज्यादा रकम 6 लाख रुपए तक है। तो ये एक अहम तहफ्फुज है, खासतौर पर कम आमदनी वाले मुलाजिमीन के खानदानों के लिए। बिल्कुल। आजकल यूएएन और केवाईसी ये अल्फाज बहुत सुनने में आते हैं। इनकी अमली अहमियत क्या है, मतलब रोजमर्रा में? हाँ, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, ये तो मुलाजिम का एक मुस्तकिल पीएफ नंबर है, जिंदगी भर एक ही रहता है चाहे नौकरियां बदलें। और केवाईसी
यानी नो योर कस्टमर, जिसमें आपका आधार और बैंक अकाउंट की तफसीलात यूएएन से मुंसलिक होती हैं, ये ऑनलाइन खिदमात के लिए बिल्कुल लाजमी है। अच्छा। इसके बगैर आप ना अपनी पासबुक देख सकते हैं, न तफसीलात अपडेट कर सकते हैं और ना ही ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, आजर को इन केवाईसी तफसीलात को डिजिटली मंजूर करना होता है, जिसमें कभी कभी ताखीर हो जाती है। क्या दौरान मुलाजमत पैसा निकालने के मौके हैं, जैसे सुना है घर बनाने या बीमारी वगैरह के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मखसूस जरूरियात के लिए, जैसे मकान की तामीर या खरीदारी, कोई संगीन बीमारी हो, बच्चों की तालीम या शादी हो, उन मकासद के लिए नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया जा सकता है। हर मकसद के लिए अलग अलग शराइत हैं और रकम की हदें भी मुख्तलिफ हैं। और क्लेम का तरीका? ऑनलाइन क्लेम का तरीकाकार अब काफी बेहतर हो गया है, इसी को तरजीह दी जाती है, तेज भी है। ठीक है। और अगर कोई नौकरी छोड़ दे लेकिन अभी रिटायर नहीं हुआ? ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स 2 माह तक बेरोजगार रहे तो वो पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए दरखास्त दे सकता है। यहाँ भी ऑनलाइन क्लेम का अमल तेज रहता है, लेकिन शर्त वही है कि केवाईसी मुकम्मल और मंजूर शुदा हो। एक संगीन सूरत हाल जिसका जिक्र उन दस्तावेजात में है, वो ये कि आजिर मुलाजिम की तनख्वाह से रकम तो काट ले, लेकिन उसे जमा न करवाए। हाँ, ये बहुत ही संजीदा मामला है। ये सिर्फ ईपीएफओ कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि इंडियन पीनल कोड के तहत ये मुजरिमाना एतमाद शिकनी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि आजिर के खिलाफ सिर्फ ईपीएफओ की तरफ से जुर्माने ही नहीं लगेंगे, बल्कि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो सकती है और बाकायदा फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। ये एक बहुत संगीन जुर्म है। वाकई। तो खलासा ये है कि ईपीएफओ एक लाजमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, मुलाजमीन को माली इस्तेहकाम देता है, लेकिन इसकी कामयाबी का सारा इन्हिसार आजरों की बरवक्त और दुरुस्त तामीन पर है। बिल्कुल। ये निजाम मुलाजिमीन के हुकूक और आजरों की जिम्मेदारियों पर ही कायम है। बरवक्त शिराकत जमा करवाना, दुरुस्त रिकॉर्ड रखना, केवाईसी की मंजूरी देना और मुलाजिमीन के दावों में मदद करना, ये सब आजर की जिम्मेदारियां हैं और इनकी अदम अदायगी के वाकई संगीन नताइज हो सकते हैं। तो आज के इस जायजे के बाद एक सवाल जहन में आता है। सोचने की बात यह है कि क्या ये निज़ाम आज के माशी हालात में मुलाजमीन को हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और आजरों पर काबिल अमल जिम्मेदारियां डालने के दरमियान वो जो सही तवाज़ुन है वो कायम कर पाता है? ये गौर तलब बात है। नमस्ते। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेजों और नोट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स असल में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए ही काफी अहम है। इनमें प्रक्रियाएं, नियम, जिम्मेदारियां सब कुछ बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पैसे कैसे जमा होते हैं, क्लेम वगैरह कैसे फाइल होते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या खास है। ये दस्तावेज आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए गाइड जैसे हैं। ईपीएफओ कंप्लायंस और फायदों के बारे में बताते हैं और कुछ आम सवाल भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयर की जानकारी से। इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि पीएफ कोड मिलने पर एम्प्लॉयर को ऑनलाइन फॉर्म 5A जमा करना होता है। हाँ, ये फॉर्म 5A बहुत बेसिक है। इसमें आपको कंपनी की ओनरशिप, अगर कोई ब्रांचेस हैं, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब जानकारी देनी होती है। और ये जानकारी अपडेट रखना भी जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई भी बदलाव हो, मान लीजिए पता बदला या बैंक अकाउंट, तो उसे फौरन ईपीएफओ को अपडेट करना होता है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। और आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी या ई साइन की बात भी है। हाँ, वो अब जरूरी है। सारे ऑनलाइन लेन देन,
मतलब जो भी एम्प्लॉयर पोर्टल पर करते हैं वो डीएससी या फिर आधार बेस्ड ई साइन से ही प्रमाणित होते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये पक्का करता है कि जो भी जानकारी या ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ऑथेंटिक है, सही एम्प्लॉयर ही कर रहा है। और आधार वाले ई साइन से तो ये और भी आसान हो गया है सबके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और केवाईसी पर। ये तो हर कर्मचारी के लिए होता है। हाँ, हर कर्मचारी का एक यूनिक यूएएन होता है और यहाँ एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी आती है कि वो पक्का करे कि कर्मचारी की जरूरी केवाईसी डिटेल्स जैसे आधार और बैंक खाता वो यूएएन से लिंक हो। और ये केवाईसी लिंक करना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, आजकल ज्यादातर क्लेम ऑनलाइन होते हैं। अगर केवाईसी पूरी नहीं है या अपडेटेड नहीं है तो ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अटक जाएगा। ओ, तो मतलब सेवाओं का फायदा उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, और नियोक्ता इसे अप्रूव भी करते हैं अपने डीएससी या ई साइन से। वो चाहें तो बल्क में भी केवाईसी अपलोड कर सकते हैं या अगर सदस्य खुद करता है तो उसे अप्रूव कर सकते हैं। मतलब यूएएन और केवाईसी का सही होना बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ स्मूथ चलता रहे। समझ गई। अब आते हैं योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। ये किनके लिए अनिवार्य है? तो नियम ये है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए मिला के 15,000 रुपए या उससे कम है उनके लिए ईपीएफ सदस्य बनना अनिवार्य है। और जिनका वेतन इससे ज्यादा है वो भी बन सकते हैं, लेकिन वो वॉलंटरी होता है, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से। ठीक है, और ये पैसे जमा कैसे होते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? एम्प्लॉयर को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल करना होता है और ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है। ईसीआर, इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें 3 मुख्य खाते होते हैं। एक तो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा जाता है। दूसरा ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना जिसमें सिर्फ नियोक्ता का हिस्सा जाता है। अच्छा, पेंशन वाला सिर्फ एम्प्लॉयर देता है? हाँ, वो कर्मचारी की सैलरी से नहीं कटता। और तीसरा है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसका प्रीमियम भी नियोक्ता भरता है, वो भी अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी पर कैलकुलेट होता है। और अगर ये योगदान समय पर जमा ना हो, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर लेट हो जाए, तो इस पे पेनल्टी लगती है। मतलब दस्तावेजों में लिखा है कि दंडात्मक हर्जाना लगता है और ब्याज भी। कितना हर्जाना लग सकता है? ये देरी पर निर्भर करता है। 5% से लेकर 25% तक हो सकता है। साथ में 12% सालाना की दर से सिंपल इंटरेस्ट भी लगता है। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात शायद वो है जो कर्मचारी के वेतन से काटे गए पैसे जमा न करने पर होती है। हाँ, वो बहुत गंभीर मामला है। अगर एम्प्लॉयर ने कर्मचारी के सैलरी से पीएफ का पैसा काट लिया लेकिन उसे जमा नहीं किया तो इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात माना जाता है। ये आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। बाप रे, ये तो सच में बहुत सीरियस है। बिल्कुल, इसीलिए कंप्लायंस बहुत जरूरी है। वैसे मदद के लिए ईपीएफओ का ऑनलाइन पोर्टल है, शिकायत के लिए EPIGMS है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी है। ठीक है, अब आखिर में सदस्यों को इससे फायदे क्या क्या मिलते हैं, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, ईपीएफ का मुख्य उद्देश्य तो रिटायरमेंट के लिए बचत है, बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना, लेकिन बीच में भी जरूरत पड़ने पर जैसे घर खरीदने, बच्चों की शादी या पढ़ाई या बीमारी के इलाज के लिए पैसा निकाला जा सकता है। और पेंशन स्कीम ईपीएस का क्या? ईपीएस से रिटायरमेंट के बाद एक मासिक पेंशन मिलती है, कम से कम 1,000 रुपए तो मिलती ही है। और अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति पत्नी या बच्चों को भी पेंशन मिलती है। और वो ईडीएलआई स्कीम? ईडीएलआई एक तरह का जीवन बीमा है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को एक मुश्त बीमा राशि मिलती है। तो ये तीनों स्कीम्स मिलकर काफी अच्छी सामाजिक सुरक्षा देती हैं। हाँ बिल्कुल, और ये भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारियों को इन फायदों के बारे में बताए और जरूरत पड़ने पर क्लेम फाइल करने में उनकी मदद करें। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो एम्प्लॉयर्स के लिए जरूरी है फॉर्म 5A अपडेट रखें, डीएससी ई साइन का इस्तेमाल करें, कर्मचारियों का यूएएन और केवाईसी पूरा करवाएं और टाइम पर ईसीआर भरें। सही कहा। और कर्मचारियों के लिए उनके लिए जरूरी है कि अपना यूएएन एक्टिवेट करें, केवाईसी अपडेटेड रखें, इससे उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज मिलेंगी और क्लेम भी जल्दी सेटल होंगे। हाँ, मतलब सब कुछ डिजिटल तो हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक्टिव रहना अभी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रक्रियाएं आसान हुई हैं लेकिन जागरूकता और भागीदारी तो चाहिए ही।
यहाँ एक सवाल मन में आता है। हाँ बताइए। कि सब कुछ इतना डिजिटल होने के बावजूद क्या अब भी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां हैं, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में हैं या जिनकी डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटल जानकारी कम है, उन तक ये फायदे आसानी से कैसे पहुंचे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि उन तक पहुंच कैसे और आसान बनाई जाए। चलिए आज के विश्लेषण में इतना ही। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ EPFO ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ PF ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ EPS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, EPS। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੈ, EDLI। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ UAN ਤੇ KYC ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, UAN ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਭ ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ KYC ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ KYC ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ KYC ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ DSC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ E-ਸਾਈਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ UAN ਤੇ KYC ਹੋ ਗਏ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ? ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ PF ਕਟਵਾਉਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਓਕੇ, 15,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਾਲਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 8.33% ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ECR ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ECR ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਲਾਨ ਕਮ ਰਿਟਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ EPFO ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, 3 ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ PF,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ EPS 95। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ EPFO ਅਧੀਨ, 10 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਘਟਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ PF ਵੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਕੀ ਸੀ? ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ EDLI। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਇਹ? ਇਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ PF ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ EPFO ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ UAMG ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ 1800118005। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ www.epfindia.gov.in। ਓਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ EPFIGMS, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ EPFO ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ PPO ਯਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ EPFO ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ KYC ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ PF ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।